I'm going to remove few people. Okay, so we are live now. Hello and welcome everybody on the first session of SSR Bonding for Global SSR Warriors. Welcome Shelja, Gunjan, Gini, Pipanshu, and Tanya. थैंक यू कृष्णा गुड इवनिंग एवरीबॉडी नमस्कार जैसे कि हमने बात की थी आप लोगों के साथ कि एक समय आता है जब सुनना कम अच्छा लगता है और बोलना ज्यादा अच्छा लगता है और अभी काफी लोग हैं जो बोलना चाहते हैं और उन्हें सिर्फ सुनने को मिल रहा है और जितना सुन रहे हैं उतना उन्हें कंफ्यूजन हो रही है कंफ्यूजन इसलिए हो रही है क्योंकि वो आंसर्स चाहते हैं लेकिन आंसर्स मिल नहीं रहे हैं और सब जगह जाकर सिर्फ आंसर्स ढूंढा जा रहा है और ऐसे समय पर आई थिंक एक बात हो जाती है कि अपने आप में रहकर खुद सोचकर समझकर बात करना इससे काफी चीजें सुलझ सकती हैं समझी जा सकती हैं तो हमने सोचा क्यों ना ऐसा प्लेटफॉर्म रखा जाए ताकि जहां पर हम लोग मिलकर बात कर सके एक दूसरे की बातें सुन सके क्योंकि कोई यहाँ पर कुछ बोलने नहीं आ रहा है किसी को सुनाने नहीं आ रहा है बस अपनी बात कहने आ रहा है और जो सुनेगा वो अपने आप से इसे समझेगा और इससे अपनी बात कहेगा तो अभी समय ऐसा आ गया है कि हम सुने कम और बोले ज्यादा जितना हम बोलेंगे जिनको सुननी है आवाज उनको सुनाई देगी सो विभांशु है हमारे साथ विभांशु आप क्या कहना चाहते हैं हाय हाय एवरीवन मैं विभांशु वी स्टैंड फॉर जस्टिस के प्लेटफॉर्म से आप सभी को वेलकम कर रहा हूँ यस हम काफ़ी दिनों से देख रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म का जैसा यूज़ हो रहा है वो काफ़ी लोगों को कंफ्यूज कर रहा है लोगों को ऐसा लगता है कि उन्हें इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाएगी जिसका अगर उन्होंने एक गलत लिंक से स्टार्ट कर दिया तो वो इन्फॉर्मेशन उन्हें काफ़ी परेशान करने लग गया है और ऐसे हमारे पास कई मैसेजेस आ रहे हैं ट्वीट्स आते हैं डीएम डायरेक्ट आते हैं दे वांट टू टॉक कि कौन आंसर देगा देयर आर मेनी क्वेश्चंस जिसकी गवर्नमेंट आंसर नहीं दे रही है कभी सीबीआई आंसर नहीं दे रही है कई आंसर्स हमारे पास नहीं है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कई ऐसे आंसर्स हैं जो दिए नहीं जा सकते हैं क्योंकि वो या तो केसेस हैं केस हो चुके हैं या फिर उन पे एफआईआर चल रही हैं तो वी हैव स्टार्टेड दिस प्लेटफॉर्म कि आप अपनी तरफ से अपनी कहानी पिछले एक वीक में जो भी हुआ समराइज करके बता सकते हैं कोई क्वेश्चंस हैं जिनका हम आंसर हो सकता है आपको फुल्ली सेटिस्फाई ना करें लेकिन आंसर्स इतने जरूर दे दें कि आप सो पाएँ मैंने कई लोगों से सुना है हम सो नहीं रहे तो फाइट फॉर एसएसआर ऐसे ही काफ़ी दिनों से लोगों को जगाए हुए है क्योंकि ऐसा लगता है हमने इसे इतना अपना मान लिया है कि हमें लगने लगा हम सो गए तो हो सकता है ये पिछड़ जाएगा तो एवरीबडी इज एवरी टाइम ट्राइंग टू बी कनेक्टेड टू समवन तो इस प्लेटफॉर्म से आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे साथ गिनी जी हैं गुंजन जी हैं शैलजा जी हमें सपोर्ट करी हैं हमारे साथ तानिया भी हैं वो भी साथ में जुड़ेंगी सो इट इज़ ए ओपन प्लेटफॉर्म जहां आप अपने दिल की बात बोल सकते हैं आपको कोई क्वेश्चंस हैं वी विल ट्राई टू समराइज इज कि हम एक दूसरे को हेल्प कैसे कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बात सिर्फ सुशांत की नहीं है एक मैंने कहीं स्ट्रीम में साथ में गया था तो उन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि आपने सुशांत से क्या सीखा या क्या कनेक्ट करता है तो एक्चुअली हुआ ये है सुशांत की लाइफ के इतने फेज हैं कि हर कोई अपने आप को किसी एक फेज से कनेक्ट करके उसके साथ जुड़ गया है तो वो फेज हम यहाँ पे जानना चाहेंगे लोगों से वो बातें करना चाहेंगे और हो सका तो आंसर देंगे या डिस्कस करेंगे जो काफ़ी हो सकता है इस स्ट्रीम के साथ बहुत लोगों को फ़ायदा पहुंचा सके उन्हें थोड़ा सा मेंटल पीस दे सके थैंक यू आई वुड लाइक टू इनवाइट गिनी जी ऑल्सो गिनी जी यू आर म्यूट यू कैन स्टार्ट अनम्यूट योरसेल्फ Yeah. Hello everyone, I'm Gini Aneja. Some of you may know me, some of you may not. So I'm basically, shall I say something about myself? yes please Right. So I'm basically, a normal person like everyone else, got into tarot reading and numerology about 10 years back. And when I heard of, so over the years, we've heard of so many deaths that's happened in Bollywood. And nothing really came out of it. After a few days, everybody forgot and moved on. But SSR, I tried to do the same for a couple of days, although I was completely in shock about this news.
And the moment I came to know it was suicide, no, definitely. My heart said this can't be. And being an ardent student of astrology, and I would say I practice numerology, but I would still consider myself a student. And I wanted answers. I wanted why, who, what. And a lot of people I know who don't open their mouths and come in the forefront, but yes, they all, especially the healers, it's touched them a lot, this death. And I tried to avoid it, but eventually some pictures came in front of me, and that's it. I was like, this is not suicide. So I made my first an analytical video on 27th of June, which had parts of astrology, numerology, tarot, and I went live with it. Which is when I realized that a lot of people are feeling it. A lot of people want justice, and I continued to do a few more videos, and I kept hearing news on, WhatsApp is the everything nowadays. It's the medical forum, it is a news channel, it's everything. So I heard a lot of things on WhatsApp. I had a lot of conversations with people, and a lot of names came in the forefront. So all these names that are being taken now, I heard them right in the first week. So yes, even I made the mistake of taking a couple of names, not directly, but I basically just did my job. I did tarot and I did numerology analysis, and immediately the second video that I did, I had to delete because I had taken some names, and my mother, created a big row about what will happen if you get arrested or if you get killed. You can't do this. I said, okay, calm down. Eventually, my son joined her, and I said, okay, I'll delete it. So in the future videos, I have been careful. I've not taken any names, but I didn't need to, because when I opened the cards, the picture on the card speaks for itself. And a lot of things. I was never active on Twitter, but because of this, and I saw how many people were active on Twitter, I went onto Twitter. I connected with a lot of people, and then one day somebody sent me a screenshot of uh, Vibhor's tweets, and I just watched it. Okay, okay, okay. But then I found some truth in that and reality in that, because whatever he was saying was exactly what I had been saying in my videos. And I was like, okay. And then I started following him, and I got in touch. I got in touch with a few other people, and I mean, I don't really discuss anything. If somebody has to say something, fine. And then I thought that he was in touch with the CBI, so I asked him to come onto my channel so that I could tell him something, which he is too busy to take up my call or my messages. So eventually he did, and that's how I connected to a lot more SSRians. And of course, after that, I was flooded with questions. Do a question on this, do a question on that, find out this, find out that. A lot of DMs, a lot of WhatsApp messages, and everything. And I have been saying right from the beginning, when I have been doing videos, that divine justice will be definitely done. When I say divine justice, so people with time are becoming impatient. They want instant, like everybody's used to instant, at the touch of a button, 2-minute Maggie, and, touch of a button, you have everything on your fingertips in your phone and your laptop. So people are wanting immediate justice, but really, does it happen like that, especially in a country like India, and especially in a murder which is done due to reasons and all those things that have been coming in the forefront, like child trafficking, minor rapes, adrenochrome, drugs, and everything. So, with all of that and with all the agencies coming in, it is going to take time. So I would request people, first of all, to be patient. Do not jump to conclusions. Do not end up getting frustrated. Yes, even I have had sleepless night. I've had dreams of him. I still connect with him. I feel him around at times, especially in the first 10 days. I super connected with him. Like, I felt like he was all around me. And it's happened with a lot of healers, a lot of tarot readers, a lot of paranormal, psychic
healers and all. Now, cut to what happens is suddenly there comes a divide in the SSRians. Everybody is pointing fingers at each other. Everybody wants the limelight. Everybody says, I'm right. Everybody is, instead of supporting each other, which is what we all need to do, we all need to support each other. At the end of the day, everybody is trying to get justice. Maybe the way is different. Ignore it if you don't like it. And exposing somebody's personal life, I don't think is the right thing to do. When that person is fighting for SSR, stick to that. Your agenda is justice for SSR, or your agenda is doing time pass, exposing people who are trying to fight for justice in their own manner. Who is what, whose past was what, does it really matter? Everybody has a past, everybody has a present, everybody has a future. Come on. That is one thing which is so not done. I don't agree with that. I have my own opinions as well, but I don't go around pointing fingers. I don't go around, calling names and being rude to people. That just shows where you come from. It just, reveals how the amount of negativity you have inside. I don't think that's a good idea, because what is happening is these people have created this rift between us so that the solidarity is broken. And what is happening now is that SSR, justice for SSR revolution that had started is starting to break down. Do you really want that? This is what they wanted. You're just adhering to what they want. Why are you being so weak? I don't think that is the right thing to do. We all need to be together. We all need to support each other. And the second and the most important thing that I've been actually wanting to say for weeks, I've been trying to put up posts on Twitter, trying to explain to people in my own way. But I guess the amount of people who I can reach to on Varun's show was probably not the amount of people who I had on my channel or my Twitter or my Instagram or wherever. So I thought it was a great idea to come. I have been requesting Varun for a long time that I'd like to come on your show. No, we'll definitely call you on a weekend also. Not an issue. So yeah. my basic thing is I want to tell people to have faith, believe, and be positive. There's a lot of people who are going to talk negative, who are going to try and bring your morale down, who are going to say, oh, this happened, and whatever happens, whether that doctor leaks a fake report, or whether some lawyer says something, suddenly takes a U-turn and says something else, whether somebody is pointing fingers, some tarot reader is going around talking negative about people, some astrologer is saying something. Why listen to that? If something creates negativity in your mind, in your heart, in your aura, just stay away from all that negativity. You just need to have faith, and strong faith. And faith needs to be strong. No one can shake it and no one can break it, because it's only belief. जैसे कहते हैं कि can I speak in Hindi? हिंदी में ज्यादा अच्छा रहेगा एक्चुअली. Okay. तो हिंदी में ज्यादा अच्छा रहेगा. तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मानो तो पत्थर है वरना भगवान है, मतलब मानो तो भगवान है वरना पत्थर है, राइट? तो अगर आप विश्वास करेंगे कि जस्टिस होगी तभी जस्टिस होगी ना. अगर आप बात बात पे टूट जाएंगे, बात बात पे रोएंगे, बात बात पे बोलेंगे ओ माय गॉड ये हो गया अब क्या होगा, ओ माय गॉड वो हो गया अब क्या होगा, आप डरते रहोगे तो फिर विश्वास कहाँ है? और जब विश्वास नहीं है तो फिर जस्टिस कैसे होगी? वो लोग यही तो चाहते हैं, हम लोगों में फूट डालना चाहते हैं, हम लोगों का विश्वास तोड़ना चाहते हैं. वो भी कोई कम समझदार तो नहीं है ना, वो भी तो अपनी तरह से हर तरह का गेम खेलेंगे. Every level, mental, emotional, every level, they are going to try and break this movement. Would you really want that? I don't think so. You really want justice for SSR, right? So I would just request everyone, please have faith, please be strong, please be positive. जो हम सोचते हैं, हमें लगता है वो हमने सोचा, लेकिन जो आपने सोचा वो एक पल के अंदर या उससे भी आधे समय में इट्स रीच्ड द यूनिवर्स.
And whatever you think will manifest, whatever you speak will manifest, whatever you write will definitely manifest. Okay. That is why गिनी I ये keep जो telling गिनी ये जो लास्ट लाइन है इसको पक्का हिंदी में बोल गया, ये बहुत जरूरी है सुनना जो लोगों आप को। कहते हैं वो होता है। आपने कई बार नोट किया होगा, आप कहते रहते हैं नहीं मुझे आज फॉर एग्जाम्पल मुझे आज पिक्चर नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। आप घर वालों को सुबह से बोले मुझे नहीं जाना, आप चले जाओ। इवेंचुअली कुछ ऐसा होगा कि आप खुद चले जाएंगे। जब भी किसी चीज के लिए ना 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 बोलोगे, दैट्स कॉल्ड द पावर ऑफ नो। देयर इज दैट्स अ यूनिवर्सल लॉ। जब आप बोलेंगे भगवान कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, एक बार भी बोल दिया ना आपने, मान लो कि वो होने वाला है, कभी मत बोलो मुंह से नेगेटिव बात, कभी मत निकालो, सोचो भी मत। क्योंकि जो आप सोचते हो, भगवान ना ऊपर कुर्सी डाल के नहीं बैठा हुआ, हमारे अंदर बैठा है, हमारे मन में। और भगवान वो सुनता है जो आप सोचते हो। भगवान वो महसूस करता है, वो प्यार महसूस करता है, वो विश्वास महसूस करता है, वो डर भी महसूस करता है। और भगवान को ना समझ में नहीं आता। I don't want to, he will not understand. He will only understand and listen to I want to. Don't को खा जाएगा वो, बहुत भूख लगती है उसे। No, don't, not, इन लफ्जों को खा जाता है वो। तो जब भी आप उल्टा बोलोगे वो होगा। इसलिए पॉजिटिव बोलो, एफर्मेशंस करो। एफर्मेशंस मतलब आप लिख सकते हो, रोज सुबह उठ के सिर्फ एक लाइन लिखनी है आपने, जस्टिस होके रहेगी, बस। एसएसआर की जस्टिस होके रहेगी, गुनहगारों को सजा मिलेगी, इतना ही लिख दोगे ना रोज, एक बार, दो बार, 5 बार, देखो कैसे नहीं होती। विश्वास बहुत बड़ी चीज है। इस विश्वास को कायम रखना किसी और के हाथ में नहीं, आपके अपने हाथ में है। और अगर एक इंसान किसी चीज के लिए प्रार्थना करता है तो उसकी मानी जाती है। मंदिरों में सारी भीड़ जमा होकर घंटियां बजा के क्यों आरती करती है? क्यों लोग वहां खड़े हो जाते हैं? क्योंकि कलेक्टिव प्रेयर्स वर्क फास्टर। जितने लोग मिल के प्रार्थना करेंगे, मिल के पॉजिटिव सोचेंगे, उसकी ताकत और बढ़ेगी। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, भगवान के लिए नेगेटिव मत सोचो, मत बोलो, मत लिखो ट्विटर पे तो बिल्कुल भी नहीं, या कहीं पर भी नहीं। आप पॉजिटिव लिखो। वैसे भी भगवान को नेगेटिव समझ में नहीं आता। तो ये बहुत जरूरी है। ये सबसे, इस जंग में सबसे ज्यादा जरूरी है विश्वास। एक दूसरे पे थोड़ा सा विश्वास करके देख लो। हाँ ठीक है, हर इंसान में बुराई होती है, मुझ में भी है, आप में भी होगी। हर इंसान जानता है मुझ में क्या बुराई है। होने दो यार, आप में नहीं है क्या? उसमें बुराई है, उसमें बुराई है। एक उंगली उठाते हो तो 3 उंगलियां यहाँ भी आती हैं। होने दो ना बुराई। आप ये देखो कि वो जस्टिस के लिए लड़ रहा है, सच्चे दिल से लड़ रहा है, बहुत है ऐसे कुछ बस लोग हैं जो फेक हैं। लेकिन आप सच्चे दिल से लड़ रहे हो ना, तो आप उस पे क्यों नहीं फोकस करते? उसने ये बोला, उसने ये लिखा, अरे उसने ऐसा बोला, क्या करना है आपको? इग्नोर इट। आप अपने काम पे फोकस करो कि आपको जस्टिस चाहिए, आपको उसके लिए प्रे करना है। जब तक हमें, तो शुरू में क्या हो रहा था, बहुत सारे लोग बहुत कुछ बातें बोल रहे थे, रिवील कर रहे थे, डिस्कशंस कर रहे थे, लोगों को एंटरटेनमेंट मसाला मिल रहा था। लोग बोल रहे थे अरे अच्छा ऐसा भी है, अच्छा अब ये भी है, अच्छा ड्रग्स भी है, अच्छा ड्रग्स के सिलसिले में ये पकड़ा गया। स्टोरी बनते 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 वो बॉलीवुड की जरूरत ही नहीं थी, इतना एंटरटेनमेंट हो रहा था इस केस में। लेकिन उनके लिए एंटरटेनमेंट नहीं था जो सच में एसएसआर के लिए जस्टिस चाहते। लेकिन जो लोग सिर्फ टाइम पास कर रहे थे, उनके लिए ये एंटरटेनमेंट था। और जब ये एंटरटेनमेंट बंद हो गया, जब सारे ये डिस्कशंस बंद हो गए, अरेस्ट होने शुरू हो गए, सबने नाम लेने छोड़ दिए और लाइव्स कम पड़ गए। कितनी देर करेगा कोई लाइव एक ही बात पे, कितनी बार एक ही बात बोलता रहेगा? कहीं तो वो रुकेगा, कहीं तो वो कम होगा। थोड़ा सा सब्र करो, एक एक करके वो एजेंसीज भी अपना काम कर रही हैं। चाहे बिहार में इलेक्शंस हो, चाहे वो डॉक्टर कुछ बोले, चाहे वो वकील कुछ बोले, क्या फर्क पड़ता है? क्या सच में आपको लगता है कि उस ऊपर वाले से, जो वहां ऊपर नहीं सॉरी यहाँ बैठा है, एक्चुअली वो हर जगह है, इस पत्थर में भी है, इन कार्ड्स में है, मुझ में है, आप में है? क्या उससे ज्यादा ताकतवर, जिसने ये पूरी दुनिया बनाई, हम सबको बनाया, उन सबसे ताकतवर है ये क्रिमिनल्स? सच में आपको क्रिमिनल्स पे इतना भरोसा है, थोड़ा भगवान पे भी करके देख लो। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ।
नहीं गिरी, थैंक यू वेरी मच ऑन द ऑनसेट। क्या होता है ना, इट्स अ वेरी मिडिल क्लास ग्रुप जो जागी है। जैसे आपके दो जनरेशन्स ने, जो आपके मदर एंड आपका बेटा, दो जनरेशन्स ने बोला डोंट डोंट मेस विद द लॉ। अभी होता है क्या, दिस इज अ टिपिकल मिडिल क्लास एंड वी आर द एजुकेटेड वंस, हम लोग रेस्पॉन्सिबली सोसाइटी में रहते हैं, और अचानक हमें बोलने का मन कर रहा है, अचानक हमें सुनने का मन कर रहा है, अचानक हमें लड़ने का मन कर रहा है। ये पहली मिडिल क्लास लड़ाई है। इसके Right. लॉज नहीं बने हैं, इसके कोई रूल्स नहीं बने हैं। अभी जो हो रही है लड़ाई, इसमें नए रूल्स बनेंगे, और ये जो Right. रूल्स बनेंगे, जो नियम बनेंगे, ये पहली मिडिल क्लास लड़ाई होगी इंडिया की। लिटरली Right. बोलती हूँ। यहाँ कोई कई पॉलिटिशियन नहीं है, यहाँ कोई लॉ ब्रेकर नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक मेंटालिटी है जो बोलती है कि अब नहीं। अपने और ये अब क्या हो रहा है, अंधेरा बहुत हो गया है फिलहाल, तो अंधेरे में थोड़ा छटपटाना लाजमी है। इट इज वेरी नेचुरल कि Yes. कोई अंदर से छटपटाहट होती, क्योंकि एक रोशनी थी, लोग बोल रहे थे, अभी कोई नहीं बोल रहा, तो अंधेरे में थोड़ा डर लग रहा है। So the platform what we have right now is just for that. And thank you so much. I'm feeling lighter. Thank I'm you. already light and I'm feeling more lighter. So thank Thank you so much for this. And मुझे लगता है काफी लोगों को ऐसी फीलिंग आई होगी। विभांशु, आप क्या कहते हैं? आई एम वेरी मच विथ इट। मैं थोड़ा सा, गिनी जी जैसे बोल रही थी, बहुत ही अच्छा पॉजिटिव और एनर्जी के बारे में बात की, तो मेरा अगर सिंपल फिजिक्स में जाएं, एनर्जी इज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो आप जैसे ही कुछ नेगेटिव सोचते हैं, आप वो एक एनर्जी अपने अंदर बढ़ा रहे हैं जो आपको घाटा करना शुरू करेगी। किसी मिस्टिक ने भी कहा है, बहुत लोग जानते होंगे, कि ये बॉडी जो है ना, केमिकल लोचा अगर मानते हैं फिल्मी भाषा में भी, तो उसका सीधा हिसाब ये है, आपकी बॉडी आपको बहुत प्यार करती है, आप जैसा सोचते हैं वो वैसा करने लगेगी। आपने निगेटिव सोचा और उसको तुरंत लगता है मेरे मालिक को ये सिनेरियो बहुत अच्छा लग रहा है, निगेटिव सोचना, तो वो वैसे ही केमिकल्स रिलीज करेगी जिससे आप और निगेटिव सोच सकें और आपको सुकून मिले। तो आप गलती करते हैं और बॉडी उसका सपोर्ट कर देती है, और आप ज़्यादा निगेटिव सोचते चले जाते हैं, फिर आपको लगता है मैं डिप्रेस्ड हूँ, बहुत थका हुआ हूँ, मैं कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। तो यही चीज़ मुझे आपकी एनर्जी वाली बात, जैसे मंदिर में इतने लोग खड़े होकर क्या करते हैं, मंदिर में सारे इतने कलेक्टिव जब पॉजिटिव एनर्जी दे देते हैं तो उसका असर, चूंकि ब्रह्मांड उतना ही है सर्कल अर्थ का, एनर्जी कहीं ना कहीं पुश करेगी, और पॉजिटिव एनर्जी बहुत से निगेटिव को कैंसिल करते हुए आगे बढ़ती है। तो जो लोग बोलते हैं ना प्रेयर की वजह से भला हुआ, बहुत निगेटिव चीजों को इससे पॉजिटिफाई कर दिया गया, उसको नलीफाई कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं अच्छा हो जाता है। मुझे ये जो समझ में आया काफी लोगों को भी फायदा करेगा, क्योंकि हम लोग बहुत लॉजिकल, जैसे शैलजा जी ने बहुत ही इमोशनल वे में बोला, आपने बोला, मैं इसको लॉजिकल में रहता हूँ कि कुछ लोग ऐसे ही बैठते हैं, अरे टैरो कार्ड रीडर हैं, हम ये नहीं मानते, तो ठीक है, आप इसको फिजिक्स में समझ लो, आप इसको स्पिरिचुअल नहीं समझना है तो मैकेनिकल में समझ लीजिए। एक बात मैं इस पर बोलूंगी, जब आपने ये बात बोली कि एनर्जी, आपको मेडिकल तरीके से बताती हूँ। आई एम अ वेरी लॉजिकल पर्सन। ये इन सब चीजों में ना मैं बिल्कुल नहीं मानती थी कि ये है क्या, मैं खुद नहीं मानती थी, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ जब मैंने देखा कि इट वर्क्स एंड इट इज सो ऑन द डॉट, तो मैं मानने लग गई। लेकिन जब डर या फेथ नहीं होता, डर होता है, तो हमारे मेडिकली स्पीकिंग, हाँ मैं मेडिकली बात कर रही हूँ, हमारे शरीर के अंदर जितने इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जब नेगेटिविटी आती है या डर आता है, हमारे शरीर के अंदर दिमाग से लेकर जितने इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो सारे सुकड़ने लगते हैं। और जब वो सुकड़ने लगते हैं तो हमारा कभी हाजमा खराब होता है, कभी सर में दर्द होता है, कभी जुकाम होता है। जितने हमारे इमोशनल जो नेगेटिविटी है वो हमारे शरीर में बीमारी बन के सामने आती है। बीमारी और कुछ भी नहीं है, हमारे इमोशनल और मेंटल थॉट प्रोसेस पॉजिटिविटी। अगर आप हमेशा खुश रहेंगे, आप देखेंगे कि जो इंसान हमेशा खुश रहता है वो बीमारी नहीं पड़ता, वो 80 साल 100 साल तक जीता रहेगा, क्योंकि उसे ना किसी चीज का डर है, ना वो कभी दुखी होता है, ना वो नेगेटिव बोलता है, ना सोचता है। वो कहता है नेगेटिव बात करने जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। लेकिन जो इंसान हमेशा दुखी रहेगा ना और हमेशा नेगेटिव सोचेगा ना, वो हमेशा बीमार रहेगा। ये एक बहुत मेडिकल फैक्ट है, इट इज मेडिकली प्रूवन। तो अब आप जब आप नेगेटिव सोचते हैं तो ना सिर्फ वो नेगेटिव
वाइब्रेशंस आप यूनिवर्स में डाल रहे हो, आप अपने शरीर का नुकसान कर रहे हो। इनफैक्ट लेट मी टेल यू समथिंग, आज मैं इस शो पे आने से पहले मैं कुछ रीडिंग्स कर रही थी जो मैंने अपने चैनल पे डाले, और लास्ट जब भी मैं एसएसआर की सब्जेक्ट को लेके कोई भी रीडिंग्स करती हूँ, तो एक मेरे पास डेक है मैसेजेस फ्रॉम द स्पिरिट्स। सो आई बेसिकली आस्क सुशांत टू हेल्प मी विथ अ मैसेज फॉर द एसएसआरियंस। और मैंने वो कार्ड निकाला, एग्जैक्टली यही लिखा था उस कार्ड में, लिव इन द नाउ, बी पॉजिटिव, आई एम हियर हेल्पिंग यू, ऑल द स्पिरिट्स आर हेल्पिंग यू, लर्न टू लिव इन द नाउ, थिंग्स हैपन फॉर अ रीजन। जैसे बहुत लोग पूछते हैं, मुझसे भी ये सवाल कई बार कर चुके हैं, मुझे कभी मौका आया नहीं इस तरह से विस्तार में बताने का। लोग कहते हैं एसएसआर क्यों, उसकी डेथ पे इतना बड़ा तमाशा क्यों हो रहा है पूरी ग्लोबली, पीपल आर फाइटिंग फॉर जस्टिस, व्हाई? Two reasons. One, this is a 2020 year. So numerological reasons and astrological जो भी चल रहा है, उसके हिसाब से ये बदलाव आना था। अब सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग, कहीं तो बदलाव आना है ना, तो उसके लिए कोई तो वजह बनने वाला है। तो मेरे हिसाब से, जैसे जनरली स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, स्पिरिचुअलिटी में कहते हैं कि हर सोल का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट करके आता है कि मेरे साथ ये होगा और मैं अपने ये लेसन सीखूंगा जो मुझे सीखना चाहिए, या मेरी वजह से ये होगा। मे बी, जस्ट मे बी, कि सुशांत का ये कॉन्ट्रैक्ट हो कि दुनिया में बहुत नेगेटिविटी फैल गई है, क्राइम बढ़ गया है, मैं उसे खत्म करना चाहता हूं, तो उसके लिए मेरे साथ कुछ होगा तो शायद दुनिया जागे। यही वजह है कि आज उसके मरने के बाद भी हर इंसान, every SSRian tell me one who will say I've not dreamt of him. Everybody is dreaming of him. Everybody is feeling him. Everybody is thinking of him, crying about him. People cry till date, they cry. इतने महीनों बाद भी मैं कितनी बार रो पड़ती हूँ उसके बारे में सोच के। यहाँ पे तो 3 लोग हैं स्क्रीन पे जो रोते हैं। हाँ, तो मतलब वो सबके दिलों को छू गया है, जबकि ऐसा नहीं है कि मैं उसकी फैन थी या मैं उसकी हर फिल्म देखती थी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मैंने उसकी हर फिल्म देखी है, लेकिन फैन जैसी कोई बात नहीं थी। पर एक चीज मुझे याद है, मैंने उसकी जब पहली फिल्म देखी थी, वो ब्योमकेश बख्शी, और उसके बाद मैंने पीके देखी। मैंने कहा ये है कौन, मतलब इसे देख के ऐसे लगता है जैसे मेरा कोई अपना है और मैं इसे जानती हूँ, कहीं तो मिली हूं मैं, कहीं तो मिली हूँ। और आमतौर पे आपको ऐसी जिंदगी में बहुत लोगों के साथ ये महसूस होता होगा, और फिर हकीकत ये भी पता चलती होगी कि नहीं, मैं तो इसे कहीं नहीं मिली, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। आमतौर पे ऐसा तब होता है जब आप किसी जन्म का कोई रिश्ता हो सकता है सुशांत कोई एंजल हो जो धरती पे आया ही सिर्फ ये बदलाव लाने हो, वो ये बदलाव लाना चाहता था, इसीलिए उसने ये कॉन्ट्रैक्ट किया। कॉन्ट्रैक्ट के तहत वो, आई मीन उसका मर्डर हुआ, ताकि ये सब लोग और ये सब चीजें एक्सपोज हों। और ऐसा नहीं है कि ये सब आज हो रहा है, ये तो सालों से हो रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि दुनिया को नहीं पता है, सबको पता है, पर कोई बोला नहीं, आज सब बोल रहे हैं। तो ये सब भगवान का, ऊपर वाले का खेल है। थोड़ा सा हमें उसका साथ देना है, ऊपर भगवान का साथ देना है जो हमारे अंदर बैठा है। हम ज्यादा से ज्यादा इतना तो कर ही सकते हैं ना कि हम हर एक के साथ प्यार से पेश आए, कंपैशन, लव, काइंडनेस। क्या ले लेगा कोई हमारा, यार प्यार से बात कर लोगे तो। एसएसआरियंस एक दूसरे के साथ लड़ेंगे तो कहाँ से होगी जस्टिस? एक दूसरे से थोड़ा सा प्यार कर लो, एक दूसरे को समझ लो। This is what I think is very, very important if you want justice. Absolutely, Kenny. And this is necessary, and this is what I'm glad you're speaking, because now when people can hear, let them also talk like that, because that's the whole intention कि आप किसी की ऐसी बात सुने तो आप ऐसा ही बोलें, सोच समझ कर। अगर आपको लगे कि आपको ऐसे बोलना है तो आप ऐसे बोलें, और ये पूरा प्लेटफॉर्म इसीलिए बना है, and we want to keep it going like that. Thank you, Kenny, so much.
Thank you so much. Definitely, Thank you to give me this opportunity. please, I've been no waiting and for no, this no. for Remember, another one is due, and please come for that too. sure, sure, Yeah. sure, Thank you so sure. much. Thank Thank you. you, Giniji. Thank Thank you. you. Can I leave? Shall I? Yes, Or please. you Yes. want me to stay No, on? I would love, we would love for you to stay, If but you can stay, if you can Okay. stay, great. Because if there's something coming and Whatever. going, If you want me yeah. to go, I'll exit. No No, no, problem. I no, no, think you no. want to Just call stay. some more people in. No, don't worry. This space, this space. I just Okay. wanted Um, to I'm yeah, here. I yeah. wanted to ask Giniji one question. When did See, Giniji, when did you start doing this tarot reading? 2010. Okay. That's when So I started learning, and along with that, I started doing it for my friends and family. And, I mean, it came true. So they started, giving my names. Aage, aage. I started with 100 rupees. And that is because my teacher told me that you can't do it for free. Initially, I used to do it for free because I never thought of making it my profession. But my teacher said that no, you're taking on karmic debts, and in the next birth probably you'll have to pay it. So I was like, okay, sorry, I don't want any debts. This is my last life. I want to make sure about that. So that's well, how it became my it's good to profession. know because I know some of your friends back home. Oh, you do? Yes, Geeta Shivdasani and all these people, they are my childhood friends. So Who is that? Sorry. Geeta Shivdasani, Ha 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 ha. Yes, 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 yeah, yes. you're Nikki's sister, aren't you? No, I'm not. Okay, because People ask me that, but I'm yeah, not. because I thought because you look so much like okay. Nikki. Yeah, I know. People have Yeah, always told me that. no, but I will see I you always next wondered year. about these private conversations going live. Can we just have this No, backstage? no, no. I'm not going to do private conversations. All I wanted to do was ask her when she started because she's really in deep knowledge of this stuff. Absolutely. So And I that think is why. also it's how you live your life. So that also kind of reflects in the way you speak, and that's pretty evident, Guinea. And it's quite nice to hear you. Thank Honestly, you. it's very, very You said nice. you said that this what I spoke is not something everybody doesn't know. Everybody knows that. I'm sure Yeah. everybody knows that. Let them peep into their own hearts. Everybody knows it. They just forget. In the walk of life, in the journey of life, and all that negativity around, they forget. They just need to keep reminding themselves. गुस्सा मुझे भी आता है। कई बार कोई कुछ लोग ऐसी बातें कर देते हैं, मतलब मैं गुस्से में भर जाती हूँ और मैं टाइप करके टक 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 के ये बोल दूंगी, वो बोल दूंगी, यार छोड़ यार, ये पागल है, इसके साथ मुझे तो ही होना, बोलने दे जो बोलना है। That's his karma. Because when Yes. somebody is so, another fact is that when you talk negative about somebody, you are multiplying your negative karma and you're actually deducting their negative karma. तो उसका तो फायदा हो रहा है, बोलते रहो, ठीक है। Another good I, one, I, Hindi में हाँ तो बोलकर, and then I'll go to Gunjan after that. ओके, तो मैं ये कह रही थी कि जब आप किसी की बुराई करते हैं तो आपके बुरे कर्म बढ़ रहे हैं। हिंदू धर्म में लिखा है, हर धर्म में लिखा है कि किसी की बुराई मत करो, किसी के बारे में बुरा मत बोलो। अगर वो बुरा है तो उसे अपने घर में बुरा रहने दो, आप किसी की बुराई मत करो, क्योंकि जब आप किसी की बुराई करते हैं तो आपके बुरे कर्म, क्योंकि कर्म जो होते हैं वो मन वचन कर्म से होते हैं। तो जब आप वचन बोलते हैं किसी के बारे में कुछ बुरा, तो आपके गलत कर्म, जो बुरे कर्म है, वो बढ़ रहे हैं, वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और सामने वाले के बुरे कर्म कम हो रहे हैं। तो वो कम हो रहे हैं, वो तो अच्छा है, लेकिन आप अपने कर्म क्यों बिगाड़ रहे हो? Thank you. Thank you. Gunjan, Thank you, Giniji. bolo Papa. You know what? When I was hearing Giniji, it was like my sister speaking. So I was in search of a faith. I could never identify with the faith I was born with. So I started following Buddhism. So I've left, I still have got a very strong belief in karma. So what Giniji was saying, it is so evident what I have learned in these 10 years, that karma is something that you manifest. So, and plus it starts with thoughts, words, and actions. And whatever she was saying, it's something that I was feeling, that whatever she's saying, it's what I believe in. So, when negativity is something that even a baby can do it. It is actually a positivity wala thing, that you have to actually tell yourself, no, everything will be fine. And when she was talking about
writing it. Whenever you write some prayer also, I will do this. Never say no. Negative prayer ever will get answered. If people think now that agar मैं किसी का बुरा चाहूँ, at time my father says that please wish ill for me. I said even if I try, that will never get fulfilled, because God or the universe will only, they have been filtered like that they'll only hear good things, they'll not hear bad things about anyone. Intention is very And important. exactly. Intention is very important. Exactly. And even if somebody has done bad to me, day before yesterday, there was some kind of tussle between me and my dad. And two times something was about to utter my mouth. I had to do this. I said, no, I'm not going to, because as it is, I feel that in my past lives, I've done a lot bad, and my life is coming on track. Let me not even have a negative thought about my own father. So that was a thing that I kind of, whatever she was talking about karma and manifestation, it's so true. And it doesn't take, I've been a very negative person, not because I was a negative person. I was born with a very positive attitude in life. But over the period of time, the people I met, I have had, I have to really put in effort to become a positive person. But these 4 and 5 months, I've never felt any time a feeling of lack of hope. I have never felt that Sushant को justice नहीं मिलेगा. I've always felt that why are people talking negative? At times I am also getting trolled on social media. So I like कि I don't think they're prepared to hear all this. Yes. Plus, I'll start how it's nothing new, but how my journey with Sushant started. Like many, I was never a fan of his. Um, 14 June, this news breaks to me, and been a person who has been into depression since age 16. So when I saw his pictures and people said that he's hanged himself from the ceiling, it didn't come across very positively. And I said like lagta nahi hai, because when you have gone through depression, you know that this is something not relatable. Then second thing that happened when they talk about the drug abuse and even the bipolar thing, I did not feel that connection. I said ye believable nahi hai, and it's not coming as a third party narrative. It is a person who has gone through all this. I have been with bipolar patients and I know what kind of a mentality they have got. I don't know, मतलब it's the fifth month and मुझे रात को ना नींद नहीं आती है, and I always, and it's something that everybody is going through, and I feel that he's always there, and I had no clue जिस इंसान का मेरे साथ कोई relationship नहीं था, वो इंसान मेरी जीवन का इतना important हिस्सा बन गया है कि my life has centered around him, and it's just not him. I will just trying to mention because पिछले एक महीने से I was trying to contemplate. There's so many things, and Shelja ji said that we have, everybody wants to speak. We don't get people to listen. I have to pay 500 rupees per week to my shrink. He said मैं कुछ नहीं करता गुंजन, मैं तुम्हारी सिर्फ बातें सुनता हूँ. आजकल किसी के पास टाइम नहीं है हमारी बातें सुनने के लिए. So over here we want to talk about Sushant, and at times we don't want to talk technical stuff, we want to talk emotional stuff. If I'm unfollowing someone, मुझे कोई बोलता कि तुमने उसको अनफॉलो क्यों किया, मैंने कहा मेरी गट फीलिंग ने कहा, मुझे किसी नैरेटिव ने आके नहीं बोला कि इस बंदे को फॉलो करो या इसको अनफॉलो करो. So I basically feel that during my youth, the first person who I saw going in such a manner. Now, if we take back to flashback, what I was in school, then Divya Bharti died. Many people know about Kuljit Randhawa. So that day I was taking out a list of people. I was shocked. Not even only India, abroad, our internet is flooded with people who have had mysterious death. कल मैं जिया खान की फोटोग्राफ्स देख रही थी, तो आई वाज फीलिंग लाइक इजंट दिस द सेम थिंग. शायद हम Exactly लोगों said. को हमको Exactly. शायद सुशांत अगर हम उस टाइम पे ये एक्शन ले लेते, तो शायद आज सुशांत जिंदा होता. आई फील लॉट ऑफ ओनर्स ऑन आवरसेल्व्स बिकॉज हम लोगों ने बहुत चीजें ऐसी की हैं जो हमने बहुत ज्यादा फोरगो की हैं कि यार यार मेरे बोलने से क्या होगा.
मैं तो अकेली हूँ ना, मेरे बोलने से क्या ही हो जाएगा। बट नाउ अगर हर एक घर में एक एक सुशांत भी है या एक एक SSR वॉरियर भी है, मेरे कहने से होगा। So like in my family also, they are like, why are you doing this? I remember initially when I started making videos, they were very aggressive. I posted on my social media, I was judged, I was trolled, and my mom was like, as Sharjaji was saying, yeah, why are you doing this? When I wanted to make a video on Man Ki Baat, my mom said, Prime Minister se panga mat lena. Mom, I am no one, yaar. I am just a small voice, and I am feeling so fortunate, so empowered that I am able to speak. I am able to tell what I'm feeling, and it's just not about Sushant. It's like he has taken out so many emotions inside me. Why only Sushant? There's some things I connect with Jia on a. I may be very unfortunate people जिसके साथ जो सुशांत के साथ हुआ है वो कहीं ना कहीं मेरे साथ हो चुका है, जो जिया के साथ हुआ है मेरे साथ हो चुका है, and people, my friends say that you are hurting yourself by connecting on an emotional level. And I'm being very frank to you, अगर मैं इमोशनल इंसान नहीं होती ना, मैं इस लेवल तक जुड़ नहीं पाती, क्योंकि मेरा, like if I'm like this, then only I'm in this. I've never done this. I have been part of Nirbhaya and all those campaigns, but they have been on a very superficial level. This time is like आई थिंक सुशांत हैज बिकम पार्ट ऑफ आवर लाइव्स, एंड लाइक मैं शायद बहुत ज़्यादा उन फॉर्चुनेट लोगों में से हूँ दैट आई शेयर सम पोर्शन ऑफ हिज पेन। बट हर एक कोई इंसान उससे जुड़ाव महसूस करता है और उसको लगता है कि यार मैं कुछ एक ऐसी वीडियो कर दूं कि लोगों को लगे कि यार होप नहीं छोड़नी है, बिकॉज लूजिंग होप, it is not, it doesn't take time. Negativity doesn't take time. It is positivity that positivity you have to keep on telling yourself that no. See, I am a person who has been in depression, and past 5 days I have been in a low phase, but Sushant keeps me going. It's the thing that is keeping me going. And I feel that अगर मैं हूँ और मेरे साथ अगर 50 मेरे फॉलोअर्स हैं, वन नेगेटिव पोस्ट इज गोइंग टू मेक देम फील दैट यार गुंजन अगर ये कर रही है ना, तो यार हम हमें, like I am, you people who are behind you na, you should always think about those. So a single Yes. negative tweet, a single negative post can actually, if I am crying, my cry and my tears should be a message of strength. My tears should not be, oh, I have lost hope, this Sushant ko justice nahi milega. I have people who have come up to me and posted things to me, Gunjan, we are very sure Sushant ko justice nahi milega, but I don't listen to it. You should have those filters in frontal negativity यहाँ आने नहीं देनी है बस. And people like me, हमको negativity मेरे को ना बहुत जल्दी आ जाती है. So I have to do a very conscious effort. Like my doctor says that diabetes वालों को मीठा अच्छा नहीं है, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए negativity अच्छी नहीं है. So like I'm around negativity, but still I have to. I'm very fortunate that people are there who are lifting me up. Yes, but yes, I'm very glad that I heard Ginny ji, and whatever she's saying is so evident. Whatever you throw to the universe, it will come back to you. That's I it. want to say one thing. When you say that you've been into depression, you've been low for the last 5 days, and you can't sleep, if you can, do some pranayam and meditation, some breathing exercises, deep breathing, and it will really help you. As far as your depression is concerned and allowing negativity to enter, why should that negativity affect you? That means there is some kind of an emotional weakness. There And are I'll tell you that SSR case has made me so strong. This case is teaching me so much that I needed to learn in life. So much. So make yourself strong. If you want to fight for SSR, you have to be strong. No negativity can affect you. And you I'll have give to you believe another. that. You have to believe that negativity does not affect me. Because if you keep saying negativity affects me very fast, then it will affect you. But if you keep telling yourself, no, negativity doesn't affect me, I am very strong, then you will be strong, right? And okay. second thing is, whatever feelings whatever that keeps you awake or negativity comes in your mind or whatever, before going to sleep, sit and write down everything.
Just write it down. Even if you have to tear it up after that, write it down. See what good sleep you get. Can I say Write so down about it. I will say this thing that I am being under depression since age 16. So there was some instance that triggered it, but I don't know. That's what medically they say, that there are three hormones in your brain. So one of them also, out of any particular loss, there was some loss I had, and suddenly the people around me, from a very protective environment, they change into a very negative and violent ones. So yes, there is a little bit of weakness that I'm a very emotional and a weak person, I say. So but I have to make an effort to pull myself out, and majority of the time I do, I'm the winner, but at times I kind of fall short. You said, you Gunjan, said, I'll give you you a tip, yourself Gunjan, for said next. that Sorry. intention, words make a difference. So if you are going to be positive about justice for SSR, the first thing you need to do is be positive about yourself. Stop saying negative things to yourself. I am weak. We all are emotional. Even I am emotional. But don't say I am weak, because that is the vibration you're putting in the universe, right? तो पॉजिटिव अपने बारे में भी तो बोलना है, अपने बारे में भी तो पॉजिटिव बोलो कि मैं स्ट्रांग हूँ, मैं इस दौर से निकल जाऊंगी, जो हुआ वो पीछे रह गया, मैं आज में जीऊंगी, मैं खुश हूँ. Say these things to yourself. That's Thank you. all I would say. Perfect. And one little tip for you, Gunjan. वैसे मैंने अंधेरे कमरे का I gave you this idea that you're in a dark room. When people start getting negative around you, just imagine them in a dark room and they don't know where they can put their hands. So they're getting scared and they're saying, हाथ कहाँ रखना है समझ में नहीं आ रहा उन लोगों को, तो थोड़ा छटपटा रहे हैं. So just imagine them in a dark room and they're looking for a hand, whereas you have placed your hand on the next person already. उसके कंधे पर रख दिया है. So wait, let them, don't judge them. धीरे धीरे उनका हाथ आ जाएगा. They will touch you and they'll say, okay, now we are fine. So you have to wait for these people to come back to the channel. Yes, yes. I wanted to Coming, share this. Gunjan, okay, I will come back to you. I think Vinita ji is also waiting quite long. We can add her words also, and then we can all again discuss. Yes. Vinita ji, are you can you hear us? I can hear you guys. Yeah, Let you me can go ahead so that we can unmute have a collective. myself. Yeah. Uh, like Gunjan said, that she's had this depression and this bipolar thing a couple of years ago, or whatever she was going through. To be honest with you, when all these things were coming up in case of SSR, I was in total denial because I will never believe it, since I have a very, very dear friend who lives in the Bay Area where Varun lives. She is bipolar, and I've known her for the last 25 years. Bipolar people do not act the way they were saying about SSR. And I have, I was never a fan of SSR. Uh, I never saw his movies per se. I only saw two movies in the first initial stages of his life in film industry. One was Kaipoche, and one was MS Dhoni. I really didn't follow him at all. I didn't do nothing except I used to watch Pavitra Rishta, but then subsequently, after this whole scenario, I was so broken down because he was declared going away out of this world on the day my son was born. So I'm like, I'm delivering, I'm like, it's my son's birth, and I'm seeing a son go away from this world. That's not happening. That's not happening. That's not happening. And since then, from the 14th of June, I've been actually pulling my hair. You can see that I've literally lost my hair because I was so depressed. But then, I thought, no, I can't be depressed. I have to think very positive about SSR. And that is why I try any which way to connect to the fact that no, he's doing good for this world. And we have to really follow Thank what you. he's trying to indicate to us. वो हमको बता रहा है एवरीडे मुझे स्लीपलेस नाइट्स होती हैं बट
Nahi, I have to have the sleepless nights. I've told the doctor about it. And he said, I'm going to give you prescription pills. But I'm not taking prescription pills. I'm keeping it, and the bottle is right here. I'm keeping it. But I'm not taking it because I know I have to get justice for Sushant. And we will have to strive together. We have to keep positive, like Giniji said. She says she was never involved with him just like me. I've never really watched his movies, but I made it a point just to see all his movies because I wanted to know from I get an idea as to what he was. And now I feel he was the God's child, Lord Shiva's child. So we have to be together. And Gunjan, you have to be strong, like Giniji said. You have to be strong. You really have to be strong. गुंजन I फ्रॉम just want नाउ to add, ऑनवर्ड्स स्टार्ट माय ओनली रिक्वेस्ट इज दैट रिक्वेस्ट क्या और ये मेरे कोई भी दोस्त होता तो सीधा ऑर्डर करता हूँ हाँ, ये जो डी वर्ड है ना ये हाँ, ऐड नहीं करना इसकी जगह आप इसको बैड फेस बोल देना तबीयत हाँ। खराब थी बोल दो नॉट फीलिंग अगले वेल बोल हफ्ते दो गुंजन फिर से आएगी हाँ और इस बार नहीं और ये बोलेगी। डी वर्ड कोई ये कुछ नहीं है ये अगर एक टर्म फ्रेम कर दिया गया है ना तो ये गूगल वर्ड है की वर्ड बोलते हैं इसको ताकि जब भी आपका दिमाग सर्च करना चाहे तो आपको बुरा से बुरा दिखे जैसे आपको सर्दी खांसी भी हो और गूगल कर लो लास्ट में आपको वो दिखाएगा आदमी इससे मर जाता है तो वहां नहीं जाना है हमको वो वर्ड ही यूज मत करो ना आप कुछ कोई डिप्रेशन डी वर्ड कुछ नहीं होता है बैड फेज था तबीयत खराब थी मैं पीस पे नहीं थी मेंटल पीस नहीं था कुछ हाँ नाउ यू कैन कंक्लूड विथ विनीता जी यू कैन गो अहेड no, I just wanted to No, say the I agree. bipolar patient. No, no, one second. The bipolar patient, Huh. I have got divorced. So my ex-husband was a bipolar patient. I'm not a bipolar patient. So I had circumstances in which people around me are very violent, because of which psychologically it has affected me. And I'm one of those happy people. So one of the reasons why I could not stay in that depressed mode was because when I first time went into the shrink's office, he said, "What? How can I help you?" I said, "I want to remain happy." He took that as a line, and it's on his office wall. He says, this person will always remain happy because she doesn't want to remain depressed. So whenever I want to pull myself out, because inherently I'm a very happy person, so I cannot see myself in a crying in a that stressful mood, even if it's from the gunk that people are passing on to me. But I will actually, Vibhanshu, I'll keep it in mind. And one more thing, like many, Sushant has actually grown me to a very many different emotions. And like even his dreams of SSR, I've actually talked about it in my videos also, that they are out of 150 dreams, maybe 130 dreams are just about others. And like I have talked about this, that there was few dreams that I also identify with, and I felt that इसके अपने ड्रीम्स कुछ खास थे ही नहीं। इसके जितने आप 150 में तो देखो, ये बंदा सिर्फ दूसरों के लिए जिया है। मतलब हम लोग कभी कभी चैरिटी करते हैं ना, हम लोग कहते हैं कि यार ये चैरिटी कर रहे हैं ना, उसको खुशी मिलेगी। सो आई हैव रेड समवेयर सुशांत यूज्ड टू डू चैरिटी कि ये मुझे खुशी मिलती है। So there are very less people, whether it's planting or doing recycle stuff or anything. I wanted to contribute as a teacher to tell people that Sushant जिस लेवल पे conservation के लिए भी काम कर रहा था, it was in preschools and even schools वो पढ़ाया जाता है, but a person who's an actor thinking about conservation and वो सब अपने level पे करना and not talking about it on social media, that was like मेरे एवरी टाइम में जब उसके बारे में पढ़ती हूँ ना, मेरी रिस्पेक्ट उस बंदे के लिए इतनी बढ़ती है। एंड आई सीरियसली फील जैसे गुरु नानक हो गए, जीसस क्राइस्ट हो गए, शिव जी हो गए, सो हमारे युग में शायद ही वॉज वन सोल एंड वी कुड नॉट, जैसे कृष्ण भगवान के मुंह में वो दिख गया। आई एम नॉट वेरी गुड विद द फेथ, बट हम लोग शायद डिटेक्ट नहीं कर पाए। सो ये कहीं ना कहीं हमारा, we are not very fortunate that before Sushant went we could not embrace him, I would say. So let's make sure that जितने लोगों के लिए वो अच्छा करके गया है उसका हम डबल करें। एंड लेट्स नॉट, अगर हमें आसपास कोई सुशांत दिख रहा है तो उसे ना, because I wanted to, last point, I had a cousin who was chronic, she was a schizophrenic patient. And I could sense that she is not happy. She was on medication since childhood. And I wanted to say this, Didi, aap theek ho. And she was right here. And 2 days ke baad, she jumped from the wall and she committed suicide and she died 2 years back.
एंड उसके बाद मुझे वो ना रिग्रेट रहता है कि यार हम वी कैन रीच आउट टू पीपल, वी कैन ऑलवेज, हमारे सर्कमस्टांसेस में वी ऑलवेज आर सो यार वो क्या सोचेगा, सो वो क्या सोचने की जगह लेट मी एटलीस्ट आस्क हर आर यू ओके, डू यू नीड हेल्प, आई एम ऑलवेज अवेलेबल. एंड आई डिड नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट बिकॉज आई वॉज विद दैट सोसाइटी का थिंग, यार मैं कैसे बोलूँगी, यार ये क्या सोचेगी. अगर मैं वो ना सोच के बोलती कि दीदी आप ठीक हो ना, आई एम अ कॉल अवे. I think we can आपने अभी गिनी को सुना कि कभी कभी कुछ लोग कॉन्ट्रैक्ट एक तरह का लिख कर आते हैं, तो कभी कभी हमारे बस में नहीं होता, हमारी कैपेसिटी में नहीं होता, कुछ चीजें हो जाती हैं. एंड सब चीजें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो सकती, लेकिन अभी जिसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, अभी ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. लेकिन कभी कुछ चीजें हो जाती हैं, हो सकता था नहीं बोलना है, प्रेजेंट में रहो, अब क्या कर सकते हैं, यहां से जाएंगे. तो अभी जो भी कोई बोलता है ना, तो यहाँ पर एक चीज है, सुनना भी है हमको, उनकी बात सुननी है और उसको लेकर बोलना है, वहां से काफी आगे जाएंगे. एंड एक और चीज मैं आपको टोकना चाह रही हूँ, एक लास्ट पॉइंट नहीं है ये, 3 दिन चलेगा, एंड इट्स एवरी वीक. There are a I lot don't of want to do all the SSRians. talking. I think You I know, just want maybe to maybe it's enough. Maybe for this today it's fine, but anytime, just come, okay? uh, Clearly बहुत है बोलने के लिए बाबा, and speak, because there's a lot in your generation जिनको सुनना है, बहुत जरूरी. we don't Oh, have ears to listen. We want to talk and we don't have plenty. people I to can see the comments. Plenty are listening. Yes, Kini. I want to say only one thing to you, Gunjan. When you walked into that shrink's office, you said, I want to be happy. From today, you will not I will say, be I want to be happy. You will say, I am happy. okay. No, no, I I will be am happy. happy. I am happy. बिकॉज मेरी बात समझो, इट इज मेडिकली प्रोवन कि जो चीज आप बोलते हो बार बार वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है और वो सामने आने लगती है, वो होने लगता है. अगर आप बोलोगे कि जस्टिस फॉर सुशांत हैज हैपेंड और इज गोइंग ऑन, यू नीड टू से इट इन द प्रेजेंट टेंस. कल होगा, कल किसने देखा है, कौन जिंदा है, मरा है, क्या है, किसको पता. 2 मिनट का पता नहीं है. अभी रिसेंटली जो टर्की ग्रीस में जो अर्थक्वेक्स आए हैं, हाउ बैड दे वर. डू यू नो हु इज अलाइव टुमारो एंड नॉट. बी लर्न टू बी हैप्पी इन द नाउ. I That always used to is say will. I will say am now. no. That Yes. is the reason the will is always putting you in the future. I will be happy. Arey, but will, why? Why tomorrow? Why not now? I am happy right now I Yes. am happy. I'm I happy I am am right happy. now too. because every अभी time. Hashtag. आप I ना learned अपने this. यू किस कैन होल्ड योर जितना भी मन में है ना उसको एक हल्का सा मजाक में देखो, जैसे मैं क्यों अभी हैप्पी हूँ कि क्या पता लाइट कट जाए और वाईफाई चला जाए, फिर मैं इस शो पे नहीं हूँ, तो विल भी तो गया. आई एम हैप्पी राइट नाउ कि अभी बात हो रही है, तो सो राइट बी इन द अभी प्रेजेंट, ये होना पड़ता है. किसी ने एक कमेंट अभी लिखा था जो फ्लैश हुआ था कि डिप्रेशन शांत जैसी कोई चीज नहीं होती, वेस्टर्न वर्ल्ड ने इसको वो ना सी Ah, देर आर अ लॉट I ऑफ don't मेडिकल like this. स्कैम्स. There are a lot of medical scams that happen. They all originate from that Western world. You have to understand. दवाइयां बेचने का धंधा करते हैं वो, और इसके लिए दुनिया भर की बीमारियों का इजाद करते हैं, जो हो या ना हो. उदास तो yes. हमारी पुश्तों से लोग होते आए हैं. उदास हो गए, घबरा गए, लेकिन उसको डिप्रेशन बोलना क्या जरूरी है, बीमारी उन्होंने इसको बनाना तीन जरूरी है. तीन कैटेगरी बना दी है लेवल. एनजाइटी अटैक है, ये पैनिक अटैक है, देन अच्छा इससे Stress. ज्यादा कमाना है, बहुत हमारी है, अमीर आदमी है तो डिप्रेशन है, ये तो आप तो एग्जैक्टली गए. exactly. तो नहीं, और इसलिए इसको Sorry. सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़े बेवकूफ हैं वो लोग. एक डॉक्टर का धर्म है कि अगर कोई मरने वाला है तो उसको कोई नहीं कहता कि तू मरने वाला है, वो तो मरने से पहले मर जाएगा. तो जिस इंसान को डिप्रेशन नहीं है उसको बोल दो भैया तुझे डिप्रेशन है, वो तो वैसे ही डिप्रेशन में चला जाएगा सुन के. अरे कल क्यों उसने मेरे डिप्रेशन. को he explained me there are 3 hormones in your body, जिसकी लैकिंग की वजह से ये सब होता है. सो मतलब लिटरली ना ही लाइक जब किसी को स्टोन होता है ना तो वो चलता नहीं है बिकॉज व्हाई द स्टोन मूव्स व्हेन यू हैव मूवमेंट.
So I was like, "Okay, already I was feeling like really shit. And now you're telling me that there is something lacking in my brain and that's why I need counseling." So they said, "That's why I was not telling you all this because I did not want you to feel worse." So eventually I actually felt I'm a really ill person who needs electric shock support. गुंजन, I'll give you एक गुरु मंत्र. श्रिंक के पास जितने पैसे बर्बाद कर रही हो ना, ये मेरी शक्ल मत फ्लैश करो. I don't want to see my face. This, I'm sorry, I'm not in charge. Let it be a panel. Maybe तो happening. जो पैसे श्रिंक के पास बर्बाद कर रही हो ना, उन पैसों को एक डब्बे में डालो और every time you have a shrink's appointment, put the money in a box and sit Yes. and write all that you are going to tell him and tear that paper up. Trust me, you'll, instead of going to the shrink, go for a jog. You'll feel much better. Seriously, much better. Start taking care of yourself. Stand in front of the mirror and say, I am happy. I love myself a lot. Full stop. Yeah, 10 that's दिन beautiful. 15 दिन में you'll be on top of the world. Oh, that's beautiful. You see the screen, it says, I'm happy, Sushant is happy, we will win. Sushant and Disha will get justice. Keep praying, love is Perfect. the key. Beautiful. Perfect. Beautiful. Yeah, and शांतनु जी, we are listening you. आपके questions we are hearing. Yeah. उनका एक क्वेश्चन में था कि 99% we are correct, 1%, लेकिन हम बैठ के कुछ नहीं कर सकते. Actually हम कई लोग ना 1% से शुरू करते हैं और सोचते हैं बैठ के कुछ नहीं कर सकते. Then they leave the 99%. तो आज हम कोशिश कर रहे हैं 99% की बात कर लेते हैं. 1% we can push it forward. So आगे I think Nupur ji is with us to talk straight to us. Shoot your Yes. questions, Nupur ji. Nupur, I'm sorry, it said Rupa, so I thought it was Rupa. Rupa. रूपा जी, सॉरी. हाँ जी. Oh, Yes, she's been waiting hi. for मैं long. सोच रही हूँ स्क्रीन में Rupa, कौन Rupa. ऊपर है. Hi everybody. Hi. I've been listening everyone. So गुंजन के लिए मैं बोलना चाहूंगी कि गुंजन तो हॉट टॉपिक हो गई हो आज. ऐसे हंसते रहा करो और फर्स्ट थिंग यू नीड टू लव योरसेल्फ. पहले अपने आप को प्यार करना सीखो, जैसे भी हो. एक्सेप्ट योरसेल्फ. एक्सेप्टिंग सेल्फ मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. जो भी हो, राइट? हम जो भी है, हम इमोशनल है, एंगर है हमारे अंदर, सारी भावनाएं हैं. ऑल everybody has those emotions, not only you. Each and every human being, anything on this earth which has life, even animals have all those emotions. इसका ऐसा मतलब नहीं है सिर्फ तुमको एंगर आता है, तुम डिप्रेस्ड हो जाती हो, तुम सैड हो जाती हो, ऐसा नहीं है. एंड इमोशंस को लेट गो करना, लेट ऑफ करना, टेक इट ऑफ करना बहुत जरूरी है. दबा के जितना रखोगे अंदर वो मल्टीप्लाई होता है. ठीक है, मल्टीप्लाई होता होता जाता है. अगर तुमको ऐसा लगता है रो देना है, जस्ट क्राई इट ऑफ, टेक इट ऑफ, टेक इट ऑफ. द वे यू the moment you take that off from the burden of sadness, जब तुम निकाल दोगी, you feel so light. एकदम ऐसा लगता है विद इन अ मोमेंट, ऐसा लगता है कि क्या था मेरे सर पे गया. ठीक है, जैसे गिनी जी ने कहा टेयर करके फेंक दो. कितने लोग तो बोलते कि फ्लश कर दो. फ्लश कर दो इन द सेंस ये नहीं होता कि आप टॉयलेट में जाके फ्लश करो ना. फ्लश इट ऑफ फ्रॉम योर ब्रेन. टेक इट ऑफ फ्रॉम योर ब्रेन, फ्रॉम योर थॉट्स. और दूसरी बात ये है, मैं जो भी लिजनर्स है, जो भी बाद में ये सेशन देखेंगे, उनके लिए भी ये बोलना चाहूंगी कि यू कांट अवॉइड द नेगेटिव थॉट्स. थॉट्स तो आते रहेंगे, थॉट्स आएंगे, नेगेटिव कमेंट्स आएंगे, नेगेटिव चीजें सुनने को भी मिलेगा. यू कांट क्लोज योर ईयर्स. वी डोंट हैव अ शटर टू क्लोज, राइट? बट यू हैव अ चॉइस टू मेक. यू कैन मेक अ चॉइस टू कीप दैट हियर और लेट इट गो. गिनी जी कुछ कहना चाह रही है? हाँ, कुछ दिख. मैं ये कह रही थी कि जब आप बात कर रहे थे, इट इज 11 बज के 11 मिनट. सुशांत का जो हम प्रे करते हैं 11 and oh my god, for no reason I just picked up the phone. Beautiful. So yeah, whatever you were saying,
परफेक्ट। आई मीन दैट इज अ गुड थिंग कि जो इसके बाद भी ये शो सुनेंगे उनके लिए भी ये मैसेज है। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी, कैन आई प्लीज, इफ Absolutely. प्लीज। आपने कहा कि जो लिख के, तो आमतौर पे क्या होता है, एक एफर्मेशन, सी हम 5 धातु से बने हैं, एयर, या। वाटर, सॉइल, ओके। तो जब हम कोई चीज, नेगेटिव चीज जो है, जब हम एफर्मेशन पॉजिटिव लिखते हैं, तो जब उसे हम फाड़ के बाहर हवा में फेंकते हैं, उसका यस। इट इज नो, इट हैज अ मीनिंग। इट मीन्स यस। दैट यू आर गिविंग इट टू द यूनिवर्स। यूनिवर्स। यस। हमारी एक धातु हवा, हम उसको दे रहे हैं कि इसे ले जाओ ऊपर भगवान ले के जाओ। पास, इसे पूरा कर। जब या। हम पानी में बहा देते हैं, समुंदर में या नदी में, तो हम कहते हैं गो विद द फ्लो। सो यस, यस। गो विद द फ्लो, एंड somewhere, like when you want to let go of things, when you यस। write something and you bury it in the ground, it basically means this thing is something you need to manifest. कि जैसे आप एक बीज है, उसको मिट्टी में डालते हैं तो पौधा बनता है ना, तो जो यस। आप लिख के मिट्टी में डाल देंगे, जैसे आपने कुछ लिखा और उसको फाड़ना नहीं है, ऑफकोर्स उसको आप मिट्टी में डाल देते हैं, तो मतलब कि वो आप धरती माता को दे रहे हैं कि मैनिफेस्ट दिस, इसको पूरा करो। यस। एंड जब कुछ नेगेटिव लिखते हैं, जैसे कुछ मन में नेगेटिव विचार हैं, और गुंजन रात को सोने से पहले नींद नहीं आ रही, चलो वो बैठ के लिख देती, उसको फाड़ के उसको फ्लश में इसलिए डाला जाता है, या उसे जला के फ्लश में इसलिए डाला जाता है कि यू वांट टू गेट रिड ऑफ इट, ओवर एंड डन, डोंट शो मी योर फेस अगेन, दैट इज द यस। मीनिंग। So when यस। you say बट flush it from your mind. Definitely, यस, that is the meaning that is the behind main writing thing I it. wanted to, yeah, that is the Yeah, main thing yeah, I wanted to highlight, because people take it other way around कि हम लिख दिए, फाड़ दिए, फ्लश कर दिए या कुछ भी कर दिए, it's gone. No, but they keep it here. Even after doing that, they will be thinking the same way, they will be doing the same things, talking about the same thing, but यहाँ से नहीं निकालते हैं। मैं चाहती हूँ कि वो लोग यहाँ से निकाले, टेक इट ऑफ। देखो, मैं एक रेकी हीलर हूँ, ठीक है, मैं एक रेकी हीलर हूँ, टीच भी करती हूँ किसी किसी को जो भी इंटरेस्टेड है। मैं इतना ही चाहती हूँ लोग ऐसा नहीं सोचे कि कोई कोई चीज हम ऑप्ट कर रहे हैं, राइट? बहुत सारे लोगों का बहुत सारे तरीके होते हैं हर चीज से डील करने का। जैसे गिनी जी ने इतना अच्छा सा एक्सप्लेन किया, राइट? वो मैं समझती हूँ बहुत अच्छे तरह से वो क्या कह रही है। उसका मतलब यही होता है, यहां से भी निकालो। वो पॉइंट कोई नहीं समझ पाता, वो भी करो। दिमाग में नेगेटिविटी आती ही है, वो ह्यूमन टेंडेंसी है, पर आपको ये जरूर करना होता है कि ये नेगेटिविटी हमको रख के उसे मल्टीप्लाई करना है क्या? सोच, मतलब जो इतनी सी दिमाग हमारे पास है उसमें वो नेगेटिविटी को पाल के रखना है क्या? नहीं। चॉइस इज योर्स, चॉइस इज आवर्स। चॉइस अपना वाइजली करोगे। आता है थॉट्स, लेट इट गो। बहता है, बहने दो, जाने दो, लेट इट गो। थॉट आया आया, चल चले जाओ तुम, मेरे पास मत रुकना। आई एम नॉट गोना रेंट यू माई ब्रेन, जस्ट गो, कम गो, कीप गोइंग। लेकिन रूपा, अभी प्रॉब्लम क्या है ना, अभी लुकिंग, आई एम जस्ट टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ मेनी एसएसआरियंस, जो दर्द होता है ना, द हर्ट दैट वी एक्सपीरियंसिंग नाउ, कोई इसको छोड़ना नहीं चाहता है। वी वांट टू एक्सपीरियंस इट। या आई एम नॉट सेइंग इट्स नेगेटिव, इट्स अ नेगेटिव तो नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ना पास रखनी पड़ती हैं, और बट देन यू मस्ट हैव, रखना है कि इट्स अ टेम्पररी थिंग। Keep it consciously, even if it's negative, keep it conscious. Keep it consciously. It should not belong you. It should not take over. सॉरी मैम, मैं एसएसआर वाले एंगल से नहीं बोल रही थी, नेगेटिविटी के एंगल से बोल रही। No, I completely get it. I completely get it. And when I was listening to you, I said,
she makes sense. Just listen to her. Somewhere you will understand it. अभी ना दिमाग ऐसा है कि we have to listen, and somewhere Yeah, it will start making sense to us. और because everybody is immediately in तो नहीं होगा. grief. Yes, yes, The grief has many stages. You have to go through absolutely. all the stages Yeah, and we to are get there with each that. other for that. Yeah, Yeah, to summarize and understand the whole death, you need to go through the stages. yes, yes. The grief has True, so many stages. absolutely. Acceptance, denial, this, that. So many things It, has to be done yeah, stage by stage. It depends on the individual, yeah. like how they take it, how fast they come out of it. It depends on each individual. I was in denial for 38 years. I'm going to be 39 this year. So last Yeah. year I went with some lady who was under depression. So I went with her because she's like No, you used 75 it. plus. I'm going to give you brownie points for that. Don't use that word. Okay, so that person said, are you okay?" I said, "Yes, I'm fine." So they said, like, "I want to take a counseling session with you." I said, "I've come with this auntie, so I am perfectly okay, and my father's a doctor." So like that time he's like, "I did not ask your father's a doctor or not, but I just want to have 5 minutes with you." So I said, "I don't want to talk to, but I'm perfectly fine. There's nothing wrong with me." So the 5 minutes that person make me Thank you, realize that Varun. they are in a you are in a denial mode. So we are conditioned to not feel low. So we are conditioned to not feel sad. So whenever I cry, I feel guilt. I cried. I should not have been crying. So yeah, I think this is something that is not a very good thing. That crying is a sign of weakness. But now when I talk about Sushant and when I cry, that is that tears and that the crying is my sign of when people say, "No, Gunjan, in your video you were crying." I said my tears are my strength. Maybe today I'm connected to Sushant, it's because I feel him that much. I feel him this close to me that even the small thing, I don't know, anybody says that, "Gunjan, this is for Sushant." Even my clothes that I'm wearing, I want to go out and wear t-shirts that has him being there, because I feel that identifies me with him. So there are things that a person like me who was not his fan is doing. I just fail to, I cannot fathom उन लोगों के साथ क्या होता होगा जो उसके क्रेजी फैंस थे, मतलब वो उनकी लाइफ को वो कितना हद तक टच किया होगा. Everybody, please treat everybody equally. एक बात बताऊं, we are all on the same plane. Accept it. मैं अभी ना विभांशु के पास जाऊंगी क्योंकि I need a very non-emotional angle to this whole thing. Please, over to you, Vivanshu. मैं एक चीज बोलना चाह रही थी, if you guys give me a chance. Absolutely, Rupa. Please, Rupa. Yeah, Okay, sorry. let me show you something. हाँ, ये देखिए, दिख रहा है? Yes. Can everybody see this man? Yes, 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 everyone yes, is yes, Rupa. Yeah, that's my husband. ठीक है, that's my husband. It's been 4.5 years. He's gone. वो गए. मैं काउंसलर भी हूँ. It took 2 years for me to accept his death. मैं इमोशनल नहीं होना चाह रही थी, पर Yes, please. जरूरी हो गया बोलना ये चीज. ठीक है, ये इनसे पहले मेरा छोटी बहन है, उनका बेटी 14 इयर्स की थी, 13 इयर्स की थी. वो गई. उसका डैड वो कैंसर में चला गया. उससे पहले वो दोनों के बीच में मेरा सगा भाई वो चला गया. When I was just 13, I lost my parents. मतलब ग्रीफ क्या होता है ना, लाइफ इतना ठोकर पे ठोकर देता जाता है, संभलने का टाइम ही नहीं मिल रहा. है ही नहीं. Like every other year, a span of 2 years, 3 years, 1 year, you're losing somebody.
in your life. So ये इतना pile up हो गया था मेरे में, क्योंकि I have been very strong person in my family, so everybody looks up to me for the strength. तो क्या हो जाता है, बहुत बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है. तो मैं अपना इमोशंस को सरप्रेस करके 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 क्या हुआ, जब मेरा हस्बैंड का डेथ हुआ, वो इतना बड़ा ब्लास्ट हो गया मेरे अंदर. फिर 2 years, it took me 2 years to calm down. I was literally mad, like क्या बोलूं, I don't want to take that depression word, but I was literally a disaster, whatever you want to think about. I was that. You lost But yourself, just say that. yeah, I समेट लिया अपने आप को, समेट के कितने लोग मेरे फ्रेंड्स took me to the counseling sessions with the groups. मुझे नहीं अच्छा लगा, क्योंकि जो भी वो लोग बोलते हैं, अपना सैडनेस शेयर करते हैं, I was connecting to that right away. That was pushing me more low. That was not a help for me. I came out of the groups within 2 days. I'm like, no, this is not helping me. See, I'll tell you one thing. Nobody can help you. Nobody in this world can help you unless you want to help yourself. Gunjan, समझ रही हो ना बेटा? No one can help you. No doctors, no psychiatrists, nobody can help you. I've been a counselor for 20 years, last 20 years. I'm 44 now. I started my doing counseling people when I was 20 to 23. स्टूडेंट्स, छोटे छोटे बच्चों से स्टार्ट किया, क्योंकि बच्चे कितना परेशान थे. इवन आफ्टर दैट आई वेंट इनटू डिप्रेशन. होता है, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, इट्स अ टेंडेंसी ऑफ अ ह्यूमन टू ग्रीव एंड क्राई, बट टू कम आउट ऑफ इट you have to make up your mind. Here, यहाँ पे वो जो ताकत है ना, वो महसूस हमें खुद करना होता है. लोग ट्राई करते हैं, फैमिली है, फ्रेंड्स है, सब ट्राई करते हैं वो महसूस कराने का, स्ट्रेंथ को, पर महसूस तो हमें करना होता है. जब तक हम खुद अंदर से महसूस नहीं करेंगे, वी कांट कम आउट ऑफ दैट ग्रीफ. अब हम लड़ रहे हैं SSR के लिए, राइट? मैं भी डटी हूँ, मैं भी कर रही हूँ, एवरी डे PM को टैग कर रही हूँ, सब कर रहे, एवरीबडी इज डूइंग, मैं कर रही हूँ. पर अंदर जो हिम्मत आता है ना, वो डेथ को समझ के बाहर निकल के बात करने के लिए, वो हमें खुद लेना पड़ता है. इतने सारे डेथ पाइलअप हो गया है मेरे अंदर, ये वाला मतलब मैं इमोशनली कुछ बोल ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि आई लॉस्ट दैट पार्ट इनसाइड मी. जैसे बोलते हैं कि आंसू सूख गया, बोलते हैं ना, वो हालत हो गई है. देयर इज नथिंग लेफ्ट. पर अभी क्या है, स्ट्रेंथ है. आई एम मोर स्ट्रॉन्गर देन बिफोर. आई कैन बूस्ट होल माई फैमिली, होल माई फ्रेंड सर्कल, whomever connect with me. मैं वो चाहती हूँ तुम्हारे अंदर. थैंक यू. Can I say Sure. Yes, something? yes. To Rupa, you too, and Gunjan, you too, and generally, of course, whoever is listening. आप लोगों ने कभी दिवाली में घर की साफ Of सफाई course. की है? स्प्रिंग क्लीनिंग किया है घर का? Mm-hmm. जाले साफ करना, things that Yeah. you don't use anymore, giving it away, things that are torn, Mm-hmm. throwing it away. Have you ever done that? Gunjan? Gunjan, have you done that? So you do agree that when we don't need something in Throw our it away. house, we need to throw it away, which is Clutters. useless to us also. When something is left uncleaned for a long time, you will have cobwebs, Mm-hmm. जाले हो जाते हैं. उसको साफ Right. करना पड़ता है क्योंकि वो मनहूस Mm-hmm. कहलाता है. नेगेटिव एनर्जी जहां पे क्लटर होगा, मिट्टी होगी, जाले होंगे, वहां नेगेटिव एनर्जी
जाके बैठ जाती है। डू यू नो कि अगर आपके कई बार क्या होता है, हम लोग जब दोपहर के 3 बजे या रात को देर से बाहर से आते हैं तो हमारे, इफ वी आर फीलिंग वीक, हमारे बॉडी के साथ स्पिरिट्स हु हैव नॉट पास्ड ऑन अटैच हो जाते हैं, हमारे साथ घर में आते हैं और हमारे घर में आने के बाद वो घर के उन कोनों में जाके बैठते हैं जहां पे जाले हैं, अंधेरा है या मिट्टी है। Exactly similarly, we have cobwebs and clutter here. Yep. कौन साफ करेगा? कोई बाहर वाला तो आके करेगा नहीं, No. वही करना है. So when you all were talking, I was listening, and there was one thing I need to say about that. When you talk and when you think, negative thoughts will come. मेरे भी आते हैं, Yes. सबके आते होंगे. Mm-hmm. Mm-hmm. But watch your thoughts. Why? What am I thinking? Why am I thinking like that? No, no, no. Yep. Cut, cancel. Uh, I'm going to think positive. And this is the positive thought in comparison to that. That is how you have to observe what you think, what you say, and correct it and clean the clutter of your mind. How do you do that when there are, this is a That's very okay. blunt question. There are four people shouting at you. They are misbehaving, abusing you. They are violently talking to you. How do you cope with that? If there are five You members know I how and to four of them smile, are right? doing this, I how do I I Gunjan, not you get know into how to passing smile. my I didn't want to get into this discussion, but since you have directly asked me the question, I will tell you it. ये था मेरे दिमाग में पहले भी बोलने का. See, कुत्ते को कभी रोते देखा है सड़क पे? देखा है? देखा है? हाँ, क्यों रोता है? हाँ. उसे जब कोई चोट लगाता है तब रोता है. बिना मतलब के तो नहीं रोता ना. चिल्लाता है, यू नो, टाइगर मैन ईटर हो जाता है या कुत्ता पागल हो जाता है. कुछ हुआ है उसके अंदर तब वो ऐसे करता है. ऐसे ही जो लोग वायलेंट हैं ना इतने तुम्हारे आसपास, कहीं ना कहीं उनको बहुत ज्यादा हर्ट हुआ है. बचपन में हुआ होगा, उनके माँ बाप ने किया होगा, किसी ने मारा होगा बचपन में, उनके माँ बाप ने उनको ऐसे ट्रीट किया होगा, हो सकता है किसी के साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ हो. उन लोगों के साथ जिंदगी में जो हुआ वो एक्सप्रेस नहीं कर पाए, उसके लिए लड़ नहीं पाए, और वो कड़वाहट जो है ना वो अंदर बैठ गई है. इट हैज गॉट नथिंग टू डू विथ यू. वो जो चिल्ला रहे हैं But, ना, वो but तुम पे नहीं Giniji, चिल्ला रहे हैं. एक मिनट, Giniji, लेट मी कंप्लीट वन सेकंड. वो तुम पे नहीं चिल्ला रहे हैं, वो अपने अंदर की भड़ास निकाल रहे हैं. तो जब कोई ऐसे करता है ना, आई मीन आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट, but try it just once. When someone shouts at you, go and hug that person and say, why are you so sad? इतनी नफरत क्यों है आपके दिल में? क्या so प्रॉब्लम है? if that ये person लोग तुमसे says, नहीं, ये लोग अपने आप से नफरत कर रहे हैं जो तुम पे निकाल रहे हैं. अब बोलो. you know what, I understand, but at a certain point I can have empathy with those people, but it is karmic. I have met people who are violent in my life, but I made sure that I don't pass it on to my future generation. I was not even born, I was not a part of their life, but they are inflicting that in me. Okay, I understand that is something I have taken from past karma. I have to meet certain kind of people. But I'll just end it at that. Whatever my some people have gone through their childhood, they have passed it on to me, and whatever kind of abuse, they're all kind of abused. If I am of that kind of a person, I should have also passed it on. I am not passing it on, and I will make sure that I will not pass it on to a person who has not done anything to me. So why will I, out of two kids, why this one child has been inflicted with so much pain that you know she has already gone through so much? Why this child just and not the other child? And when I am saying that I still don't have ill feelings for that person because I understand. And he's saying this, मैं ना भूलूंगा ना भूलने दूंगा किसी को. But why just one person? Is it my karma is so strong that in two people, two kids were born, one is inflicted, that means my karma was so bad that I am being inflicted with these pain of violence and everything from
all the men I have met, because people say that if the people you meet the kind of it's all karmic. Is it Yeah. karmic? Because Yeah, good to Yes, know. Good to don't. Giddy, don't answer. Give yourself space. You've given questions. You don't get answers. Give space to the questions. Let the questions answer you. You asked a lot of questions out of life. Right now, don't give distance yourself from the questions. yeah, but I Stay want to step say away. one thing. Yeah, yeah, I want to absolutely, say Giddy. Yeah. one thing. Have you ever thought that when all these things are happening with you, you are thinking, is it karmic? Fine. Have you thought what is your learning in it? Focus on your learning. When somebody is doing that, no, stand out of yourself, aside from your own self, and see the whole picture as an outsider, as a third person without emotions. Just look at them blankly and wonder what is your learning. You will get your answer. Like I said, keep space. I think there are some people who want to come in, but Right. Vipanshu, So I have to give you Yeah, the space. maybe I I Yeah, can will leave. sorry, Guinea. no, Yes, I will yeah, leave. I will leave. I've yeah, been here for very long, and yeah. Thank you thank you so so much. much for having Thank me. you so much, Goodbye. Guinea. And I am also leaving. I had to get ready for my job. Bye. Bye. So Okay, Bye, everyone. thank you, guys. thank Goodbye. you. Thank you so much. How can Gunjan, you stay leave? strong. Okay, I'll leave studio here. Okay, Yeah, bye. I Good came night. on just bye for you. Bye. 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 Thank you, Jenny ji. Take Thank you, care, Rupa guys. ji. It was nice having you both. We think, Shailja ji, more people are Yeah, about but wanting to Vipanshu, I would join like in. to hear you We'll before the others start make to a talk. room. Please, Thoda. Yeah. गुंजन को आई थिंक उसको बहुत मजा आता है ये Hi. कोई इसी के बारे में बात करे. सी लव्स दैट स्पेस. इसको लाइट भी पसंद नहीं है. सी विल बी मोर हैप्पी इफ ये अभी स्विच ऑफ करके बात करें. इनको उसमें यही है यहाँ पे. सीरियसली जब हम लोग हॉस्टल में थे ना, तो हम लोग का एक थ्योरी था. डिप्रेशन वर्ड तो था ही नहीं. उसको बोलते हैं आपको गुस्सा आ रहा है. बहुत अच्छा गिनी जी ने अभी एग्जांपल याद कराया मुझे कि आप जब दिवाली की सफाई करते हो, तो हम लोग को, अब हमारे वार्डन है, मैगी रात में बनती थी, हीटर उठा के ले जाते थे. अब मैगी कैसे बने? तो हमारे लिए सबसे डिप्रेसिंग मोमेंट कौन सा है कि आज भूख लगी है, 2 बज रहा है, हमारे पास हीटर नहीं है, सबसे खराब आदमी दुनिया का कौन है? Warden. वो वार्डन. तो हम लोग अपने दिमाग में जो उन्होंने बोला ना, लिख के फाड़ दो या जला दो, तो जब भी होता था कि हाँ हर वीक एक बार वार्डन आता था साफ करो, देन वी शाउट इट आउट एवरीथिंग एज वार्डन. रूम में सबसे नीचे एक टूटी चप्पल पड़ी है, ये गया वार्डन, और जितना दूर फेंक सकते हैं हम लोग फेंकते थे. वार्डन को पता है, लेकिन उसको भी ये अंदर से था कि साफ तो मेरा ही हॉस्टल हो रहा है ना. ही इज स्माइलिंग लाइक दैट कि बोल ले, जो करना कर दे. बट वी आर थ्रोइंग द टूटा चप्पल. वी आर थ्रोइंग. एक मेरा माउस खराब हो गया था, उस माउस को मैं लटका देता था कि अगर वार्डन अभी मिल जाए तो मैं उसको ऐसे लटका दूंगा अपने ही गेट पे. एक टूटा माउस मैंने टांग दिया. माउस मतलब वो लिविंग नहीं, वो I know. कंप्यूटर का. तो Computer. नहीं तो पीटा वाले यहीं पे आ जाएंगे अभी कि माँ इन्होंने तो चूहे को टांग दिया. तो हम ये जो गिनी जी बोल रही हैं कि इसको आप जब लिखते हो ना, तो आपका अभी जैसे आप जो सोच रहे हो उसमें इंडल्ज होते चले जा रहे हैं. जैसे ही आप लिखने आओगे ना, तो खुद को आदमी क्रॉस चेक करने लगता है कि क्या मैं इतना गुस्सा हूँ, या फिर मुझे ये चीज़ लिखनी चाहिए थी, या मैं इससे भी ज़्यादा गुस्सा हूँ. तो आपकी भड़ास निकल जाती है. दैट वो भड़ास निकल गई, फिर आप अगले दिन उसके बारे में सोचते नहीं हो. और एक जैसे होता है ना उड़ता तीर, आपको कभी भी एक चीज़ जो आपके बस की नहीं है ना, उसको नहीं पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए. जैसे हम लोग में होता था, कोई टॉप कर रहा है और मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो एक मैं था जो सोचता था कि अब पास तो हो गए, और वही दूसरे लोग थे कि मैं सेकंड कैसे आ गया. उसके लिए वो साल भर की मतलब परेशानी है कि मैं सेकंड क्यों आया. बस 3 नंबर और आने थे. वो 3 नंबर उसका डिप्रेशन बन जाता है, क्योंकि वो एक ऐसा तीर उड़ चुका है, 3 नंबर ऊपर से जा चुका है, फर्स्ट वो नहीं हुआ है. बट ही इज गेटिंग इन टू हिमसेल्फ इन टू दैट स्पेस कि मुझे अगर अगर ऐसा हो जाता. आप अपने लाइफ से अगर हटा के देखो कि हाँ जो हो गया यही था, आई एक्सेप्ट इट. एक्सेप्ट करने से धीरे धीरे आपको स्ट्रेंथ मिल जाएगा. आई थिंक समवन हैज ज्वाइंड. वी वुड लाइक टू. Nosh has joined. नौशद जी. ओके Yeah, नौशद Nasir जी. here. Good evening. How are you all? We are fine, Nosh. Thank you. फाइन. Yeah, thank you. I have been waiting and waiting to understand whether
some inputs can be given to you people. I heard the other lady about karma and the Gunjan who had gone through her trauma of life. Now, there are a few things I would like to share. The first one is forgiveness prayer is very, very important. Very important. You don't need to meet the person. Without meeting the person, you can sit in your center and do the forgiveness. That's number one. You need to bless the person with what you want to happen to your life. So once you forgive, you have to bless the person with all the good things of life. And moreover, during my inner guidance, I have been given a few inner guidance that, like we have different ministers in the cabinet, uh, the law of karma is governed by a few lords of karma. So Lord Ganesha is one of the lords of karma. Lord Hanuman is a second lord of karma. Lord Saturn, that is Shani, that is the third lord of karma. And lastly, we have Ma Shakti, that is the cosmic mother. And you have one of the archangels, whichever is the archangel of yours. So we have about 4 to 5 lords of karmas. So you can invoke to them, you can pray to them. And when we are chanting any particular mantra, are you all listening? Yes, we are. Is my voice audible? So when we are Yes, chanting it a is. mantra, we need to invoke the deity of the mantra. Like for example, Mahamrutyunjay mantra, if we chant without invoking Lord Shiva and without invoking Markandeya who formulated the mantra, it will not have the efficacy of it, the power of it. And every mantra begins with the Om and it ends with the Om. So that's a couple of points which I had to, bring to your notice. I will listen to you all now. Yeah, thank Thank you, thank you, Naushir ji. And you. Yeah, ji. for the people who think it is some kind of religious platform, it is not Yeah. so. No, We are no, it's just not okay. It sharing. has nothing to Yeah, do with no, no, no. religion. I know there is thinking Absolutely behind nothing. that This people. is, Here we I are am not, talking that frame of minds जिससे भी आपको पीस मिल सकता है. हाँ अगर जी. किसी को ओम से मिल रहा है, किसी को आमीन से मिल रहा है, we will all talk about it. और इसको but कभी I भी am ये not talking, I am neither a Hindu या nor a आई एम नहीं, जस्ट Muslim. नहीं, क्लैरिफाइंग दैट कि लोग को ये ना लगे ये कोई हम लोग रिलीजियस डिबेट पे आ गए हैं और वी आर अब अबाउट टू No, चैंट this सम is मंत्रा. nothing to do with yeah. law of But karma. Naushir, See, I have a question. Naushir, I have a question. yeah, देखो, yeah. जब जैसे आपने बोला ना कि you have to आई कि क्या मैं अभी देखो आई एम मेरे दिमाग में अब मुझे कोई भी कन्विंस करे मैं देखूंगी कोई मुझे कन्विंस करे अदरवाइज मैं देखूंगी बट फॉर मी सुशांत वाज मर्डर्ड ये मेरा Yeah, अब मैं, हाँ he was murdered. नहीं बट मेरे दिमाग में ये है और अगर ऐसा है तो क्या मैं रोज सुबह उठकर बोलूं आई फॉरगिव द पीपल हु डिड इट मेरे को एकदम से आया और No, मैंने बोला you झटको don't have झटको to. आई डोंट वांट टू थिंक इट वाज लाइक इट वाज अ वेरी स्ट्रेंज फीलिंग फॉर मी बट You सोचना don't पड़ा have. मुझे You don't हाँ have जी to forgive Sushant who died. See, everyone here is because of Sushant. Why? Because Sushant was, like the other lady said, Ginny or what her name is, that some जी people are contracted to do certain, like they are like torch bearers. So Sushant became the torch bearer and he awakened so many people to become part of his cause. नहीं बट एकदम से मुझे लगा कि करना चाहिए क्या बट आई एम गोइंग मैं सोच आपने बोला मैंने सुना मैं सुनकर फिर बाद में सोचूंगी बट दैट इज This समथिंग is आई टेक फ्रॉम individual. दिस This is individual. यस See, थैंक यू या see, सॉरी
everyone, like Shishupal in Krishna's avatar, Shishupal was born for about 99 times, and the 100th time he repeated the mistake, his head was chopped off. हाँ जी, So you need to justice forgive justice people. होता है. Yeah, Yeah, it's, yeah. your heart energy center is for the earthly connections that we have. We also have the crown energy center that हाँ is जी, for the whole world. yeah. So, Rashid ji, I think Yeah, Mayank is one here. more person has joined. Mayank has Mayank joined. ने काफी Vinita ji, कमेंट्स लिखे is थे it? नीचे. या Mayank, वेलकम. आप भी अपने थॉट अनम्यूट कर लीजिए और अपने थॉट्स दे सकते हैं. विनीता जी, if you want to add, just raise your hand. We will add you. I will. I'm agreeing with what Shaila ji is saying just now, but I will talk later. Let Mayank talk right now. Okay, you are not Let agreeing Mayank with go me. ahead with it. Okay, Mayank, I agree with me यार, मैं जो भी बोलूं अकेला हो गया या तो. Okay, let's go on. Mayank, आप बोलिए. Yeah, first of all, I'd like to thank to everyone because uh, I'm really pleased to join the group right now. So first of all, I agree to Rupa ji what is said previously, and also गुंजन को तो मैं यही कहना चाहूंगा कि वो यू नो काफी करेजियस हैं और काफी मजबूत हैं वो. उनको चाहिए कि जिस तरीके से ये फ्लो ऑफ कन्वर्सेशन गया है बहुत ही अच्छा गया, मैंने पूरा देखा. और उसमें कोई आपने फिजिक्स की भी बातें की. और मैं बता दूं, मैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग किया हूं, तो मुझे एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में पता है. बहुत अच्छा आपने बताया उसको. तो और एनर्जी की बात करें तो मेन चीज यही है कि थॉट्स जो होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव सब आते रहते हैं. थॉट्स पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते. जैसे थॉट्स क्या है कि एनर्जी ही है, तो हम एनर्जी हम कभी भी काम करते हैं, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में कुछ भी करते हैं सर, तो हम कभी भी टोटल एनर्जी पे काम नहीं करते क्योंकि वो हमें पता नहीं है. वो हाँ इतना पता है कौन चेंज ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, सिर्फ चेंज ऑफ थॉट्स ले रहे हैं बार बार, तो हमारा जो चेंज ऑफ एनर्जी है कम होता जा रहा है. और अगर हम पॉजिटिव लें तो चेंज ऑफ एनर्जी बढ़ रहा है, मतलब कि पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है, चेंज पॉजिटिव हो रहा है, तो वहां से कुछ फायदा मिल सकता है. तो वैसे थॉट्स पे कोई कंट्रोलिंग नहीं है, लेकिन बस यही है कि हम इसको स्किप कर सकते हैं. और मैं यही कहना चाहूंगा कि ओम 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 शब्द का उच्चारण अगर सुबह करेंगे तो जरूर फायदा होगा. ये कोई प्राणायाम जैसे कि हम अपने सांस पे नियंत्रण करें. सांस जब निकल रहा है बाहर तो उसको कंट्रोल करें. किसी भी पोजीशन पे, किसी बॉडी की किसी भी पोजीशन पे सांस को इतना फील करें तो इससे बहुत ज्यादा होता है. मैंने इसको किया है. It's really beautiful. Yeah, I also learned somewhere कि ये जो ओम या ये जो की आवाज है, this is the universal sound. When you go in space, there is nothing but only this sound. So this is the unifier. इसको किसी से जोड़ नहीं सकते हैं. ये ह्यूमन नहीं है, ये यूनिवर्सल और अबॉर्ड मतलब हेवनली साउंड है. That's why when you connect to it, जो मेडिटेशन में कई लोगों को बोला जाता है कि chant this, not om. If you just vibrate that some gels and the frequency is same as the universal sound, so that gives you positivity. Sorry, I'm not. हाँ माइक. Man, you are not audible. आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम. हाँ माइक बिल्कुल नहीं आ रही है. और ना मैं शांतनु को बोलना चाहती हूँ, आज तो सब टाइम नहीं है, कल प्लीज शांतनु आप स्क्रीन पर आएंगे और आपकी बातें ना एक फ्लो में सुनना है. आप
because it was beautiful to hear his words. लेकिन he should come here and खुल के ना एक फ्लो में बोले. I hope you can hear me, Shant. हाँ. मयंक अभी आ रहा है, बोलिए. नहीं आ. ओ म्यूट पे है मयंक. मयंक अनम्यूट योरसेल्फ. अनम्यूट. यस. या फाइन. तो या आप कुछ कह रहे थे, आवाज आई नहीं चाहता हूँ कि मैं बताना चाहता हूँ कि जो ओम का उच्चारण है, ये अ उ म पूरा नहीं, इसमें हलंत है तो बंद होना चाहिए म. तो ये एक्चुअली 3 शब्द जो हैं, इन 3 शब्द से ही ईश्वर के कई नाम हैं, वो इन्हीं से आए हुए हैं. जैसे अकार, मकार और उकार, इन 3 से ही ईश्वर के नाम आए हुए हैं. और जैसे ये ओम जो शब्द है, ये ईश्वर का निज नाम है. बाकी सब जैसे शिव, विष्णु, ये सब गौड़िक नाम है, सेकेंडरी नेम है. और जो प्राइमरी, जो मुख्य नाम, वो ओम ही है. इसके कहने के 2 हैं, एक एक यह है, एक ओ. एक है डायरेक्ट ओम कहना नहीं है उतना. ओ के बाद सही में उसका लिखते हैं तो अ बनाते हैं बीच में, या फिर पूरा बोले आप. तो इससे बहुत ही मतलब कि लाभप्रद है ये उसी तरह जैसे रूढ़ और यौगिक वर्ड होते हैं ना, जो बेसिक रूढ़ वर्ड हैं जिनको आप तोड़ नहीं सकते, उनका कोई मीनिंग नहीं है, बट वो जब भी किसी के साथ जुड़ जाते हैं तो उनकी मीनिंग्स, ये मैं कहाँ से ये सब याद आ रहा है मुझे पता नहीं. तो आपने ये जो वर्ड्स का अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया, लेकिन ये मैंने कहीं पढ़ा है, रूढ़ वर्ड होते हैं, यौगिक वर्ड होते हैं, योग रूढ़ भी होता है शायद. दैट इज, आप सब लोग एक बार सत्यार्थ प्रकाश जरूर पढ़ें, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का सत्यार्थ प्रकाश जरूर पढ़ें. आप सबसे विनम्र अनुरोध है, जरूर पढ़ें. जी. एंड थैंक यू शैलजा जी, नौशीर जी को थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि गुंजन जी जो बार बार वापस खिंच जाती हैं उस डार्क साइड, मतलब क्वेश्चंस में, उसको कैसे दूर कैसे. मैं तो समझ गया हूँ, मैं कुछ नहीं, नॉस्टैल्जिया में चले जाओ, हॉस्टल पहुंच जाओ और हर चीज को नलीफाई करने लगता हूँ कि इससे बुरा तो वहां हुआ था और उसमें मैंने ये वाला. तो हो सकता है नौशीर जी ये बोल सकें कि पॉजिटिविटी तो ठीक है, बहुत देर से हम लोग बोल रहे हैं पॉजिटिव सोचना चाहिए, बट खुद बहुत इजी होता है, नेगेटिव थॉट्स आपको बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं. Alright, actually positivity and negativity is not the right words to use, because without negativity the current is not complete. So negativity can be used in order to self-respect, self-guard and self-protect. So one has to put the foot down. No more means enough is enough. You cannot tolerate people and allow people to take you for granted. She cannot allow everyone to ill-treat her. Just because we say it's law of karma does not mean that you do not safeguard yourself. लॉ ऑफ कर्मा ऐसा तो नहीं बोलता है कि तुम अपने आप को प्रोटेक्ट मत करो. लॉ ऑफ कर्मा ऐसा तो नहीं बोलता है कि तुम्हारे रिश्तेदार है तो तुम कैसे झगड़ा करोगे. लॉ ऑफ कर्मा मीन्स यू फाइट फॉर द राइटियसनेस. दैट इज व्हाट कृष्णा टॉट टू अर्जुन. कर्मा, Krishna taught to Arjuna that they are your relatives, but here in the battlefield, they are your enemies. You have to fight them. You cannot just let go them or let them take your advantage. So she has to get back to them. Okay. And yes, forgiveness is actually I do that. I have become no. Gunjan, I have zero tolerance to violence. That today is just listen, let it work through you. Aaj sirf sunna hai. Yeah. Gunjan, you can take my number. What he said. It's very beautiful what he said. But just let it sink in. You can take my number and we can do a session on the call. And I have counseled a number of people on the call, and people have felt
much better and relieved, rather than just grumble over the situation, and try to live in the now, in the today. Don't live with your past. Why do we need to live with the past? Bury the past so that you can stand today and then work out your coming days. Yeah. Essential. Okay. Yeah. Yeah, I think there's some people in the backstage. Vivanshu, आप कहीं नहीं जा रहे हो, आप रहोगे. Does anybody want to say something? And because we can just invite them in. Vanita, any So last what, you words? want me? No, but you have to. No, I just want to say that whatever Giniji said was good. Whatever Vivanshu and Mayank and Mr. Nasir are saying is also good. And I will see you guys tomorrow. Yes, thank you, Vanita. Have a good day Thank you, tomorrow. Thank you, Kelaji. Have a good day. Same here. Gunjan, take care. Bye-bye. Thank you, Vinita ji. Yeah. We'll see if someone comes. Yeah. Yeah. Okay. Because we have, I think, yeah. Deepak. Okay, welcome. दीपक जी, किसी को नहीं, सबसे पहले आप गुंजन को पकड़िए. She is the main culprit है. मैं इसके लिए मैं इससे इनको एक गुंजन बात will बताओ. charge you. I want her to come next time. Don't do this to her. ऐसे नहीं करो. Okay, okay. Gunjan, you can tell them to stop whenever you want. Okay, I'm No. here with you. Okay. नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ. दीपक को I love it. मैं तो गुंजन को वही बोलूंगा, जो करती हो करती रहो, लेकिन अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो. बी कॉन्फिडेंट सो मच कि सवेरे उठो ना, अपने आप में एक ऐसी फुर्ती लाओ. टेक अ डीप ब्रेथ. Say you are the best. Day by day, in every way, I'm getting better and better. Okay. Day by day, in every way, I'm getting better and better. Do you people want to experience something? Nash, what are you saying? No, seriously. Yes, I'm on a serious note. Do you all want to experience something? I don't know. Vivanshu, आप क्या कहते हैं? In relation to what? Related to what? Yeah. By doing regulated breathing the way you are being guided to do right now. No, this I'm will not take sure. time. I think people are waiting there. Yeah, people are waiting in the. Hardly 45 seconds and another 45 seconds. That's total of 90 seconds experiment to experience. Vinita, you came at the right time. Vinita, dice is with you. So, do you wish to start? I'm actually working and doing this at the same time, so I might not be fully focused on this. I'm trying to reply to messages at the same time. It's just about 90 seconds of experiment or experience you need to gain. Just go for it. All you need to do. Okay. Then जो भी ये बाद में देखेंगे, maybe this can help someone. But I will then close my video also. Otherwise, I will be distracted by it. So I'm going. You can all close your videos. Yeah. You can all close your videos. I have no idea what we're getting into. I'm sorry. Yeah. All right. I will all you need tie to myself do with is something. Yeah. Sit with your spine straight. Yes. Rest your palms on your knees with the palms facing upwards and spine straight, eyes closed, and connect the tip of the tongue to the roof of your mouth. As you exhale, let your stomach go in. Consciously, as you exhale, let your stomach go in and hold for 3 counts. Now, inhale for 6 counts and let your stomach come out and hold for 3 counts. Be aware of the center of your chest, which is your heart energy center location, and exhale for 6 counts. Hold for 3 counts.
As you exhale, stomach must go in. As you inhale, stomach must come out. Inhale 6, hold 3. Now be aware of the center of the top of your head. Keep your tongue connected to the roof of your mouth. That's the palate. Now be aware of both the energy centers, the heart and the crown or the Sahasrara energy center. And continue to exhale and hold and inhale and hold. And mentally say, I consciously forgive all. As I forgive others, I am forgiven. It is in giving that we receive. I consciously forgive all. As we forgive others, we are forgiven. Continue to exhale and continue to inhale. Now, very gently, bless everyone through your heart and your crown mentally with peace, with love, with good health, happiness, well being, spiritual progress, and financial and material abundance and wealth, with prosperity. Very gently, join your hands in the form of prayer, put them to your heart, and be aware of your crown energy center and say to Lord Parabrahma, Sadashiv, great many thanks. Ma Shakti, great many thanks. To all the holy masters, holy gurus, great many thanks. To your own divine trinity, great many thanks. And to the soul and higher self of the guiding person, great many thanks. Very gently open your eyes. Yeah. Thank you. Yeah, you're welcome all. How was your day, This was Vinita? Sorry, this was a very short session. Usually it is a compilation of 23 minutes. Yes, yes. I'm just going to give you over to Nosh. I want to go to Vinita because she's short of time. Sure, Vinita, sure. how was your day? Day has been. Can you see me? Yes. Yes, my day has been extremely busy. I'm in the middle of work, but so I've been in and out of the live session. But because there was a topic on my mind, and I don't know if this has already been addressed or discussed, but I wanted to take this opportunity, this platform, to sort of share a message and a point of view to all those fellow citizens and wonderful human beings who are of the opinion that all the SSRians who are supporting this cause or are speaking up for this are forgetting, other issues in India and other issues that concerns Indian population. So to them, I wanted to just share this point of view that for a society's wellness, I think there's just a few key factors that matter, right? So there's, like, for example, fairness, freedom, security, compassion, any kind of financial wellness for economic prosperity, and just welfare in general of people of all strata, right? Not just the extremely wealthy, but also the extremely poor. So everyone have wanting to come up and do better in their life. So as an educated SSRian, as a family person, as somebody who has a full-time job and understands economics and understands politics and understands geography and all of it,
So this is a message to those who are perplexed as to why is it that all of these people are so into this movement, as if they don't have jobs. And so to them, I want to say, we're not these nameless, faceless bots on Twitter. It's very easy to assume the worst when you see Twitter. It's just a lot of, instant, without thinking reactions. So to them, I wanted to just say that we're very much real people with real emotions and real thought process, a little bit of brain, not just all emotions. So to them, I want to say that all of these factors, the welfare of our country, depends ultimately on trust, because trust is what weaves all this together, weaves all of us together. Now, in this case, we see a lot of problems that can bring mistrust on the judicial system. Yeah. Which is very important. A fair, just, working judicial system is an extremely important part of this society. So as much as border issues with China, poverty, illiteracy, healthcare, all of those are very important things. And by us speaking for this, we're not taking away from those issues. We're very much concerned for those issues as well. But all I have to say is this is equally important. So that was some message I wanted to share with whoever will in future watch this video, and that we're not crazies. No, I support it, Vinita, because अगर ऐसा होता, we have a vision. This platform has a vision. It is, we stand for justice, and we are not stopping at one person. That's Exactly. why there are many other injustices. If somebody is overpowering our borders, injustice is there. If there is any crisis of humanity, so we will Exactly. be raising these all things. And thank you. Exactly. And this is our one of the vision. So if people are confusing that this platform is only restricted to this one point, no, it will be adding. This is just a start. I think, Vinita, we will together cover up all the things in the coming time also. Agreed. Yeah, I just wanted to kind of have that opinion out there, Yeah, and Yeah. nice one. also that it's Nice not one. about complaining, it's also about finding solutions. We're not just Yes. here to say this is bad, that is worst. We're actually Yeah. trying to say that let's recognize it, and then let's also come up with ways we can address it in a positive way without, naming, shaming, blaming anybody. We're all part of this society. It's equally our, downfall. It's equally somewhere we are responsible for what's happening. So it's us And trying to fess up. I'm glad, Vinita, you said that, because I guess everybody gets that question. Why, Yeah, Sushant? Why were you not there when Jia was being targeted? yeah, Okay, but it's it also took like, us time. It took us yeah, time to yeah, awaken. Now Yeah. we are awake. Now we are not going to go back to sleep, and it's going to go back to all those cases, Yeah. from Jia Khan to Divya Bharti, to everyone, that are mysterious cases and even things that are in our society. So we needed that awakening, and Sushant had to lose his life for awakening us. And yes, now yeah. we have gotten up. We are not sleeping anytime soon. Right. And And it's just not Gunjan, Sushant. it's not just about some individual famous personalities. What where we're coming from is, I read this New York Times article that said that, like, all of these issues are going on, but for some reason, a bunch of them, like most of India is only concerned about Sushant's death. So to that kind of, opinion, I wanted to present another point of view, that this isn't just about that. And Yeah. nobody has forgotten anything about what's truly bothering our country. But all we're saying is that this is equally important. And through this, this is a catalyst, and a lot of other issues will get addressed through this. And we're all in this for the long haul, for the right bigger picture, not just one individual. Because Sushant's case encapsulated many other things. Like, I can say that there are many other things that I could connect to, many other things, whether it's female issues, whether it's child trafficking, whether it's kind of a molestation that you see, because the emotions have come out, we can see everything very clear. We can see there are so many things that we are speaking for Sushant. Now we feel that we can speak for many other things. So when you see wrong, you're seeing that these are the things I can speak for, and I could not speak for these things. If I'm speaking for Sushant, I will speak for these many things also. I have a voice. I will speak for anything that is wrong happening in my society, and that starts with my home. Agreed. So
And Shailaja ma'am, And we are not well, mad people. exactly. Maybe we Like, are a little bit, right? But it's for a good but reason. like, Yeah. yeah, matlab, It's you know it's what it's my the new sister-in-law, normal. It's called the new my normal. The COVID normal. Yeah. my sister-in-law says there's some very heartless things. सुशांत तो मर गया, वो तुम्हें तुम्हें अपने काम पे लगा गया. But people who do not understand emotions can say these things. But पर कितनी people अच्छी who बात have बोली है, कितनी अच्छी बात है, हमें काम पे लगा कर गया है, हम करेंगे. अच्छी But very, बात इसमें बोली. very, क्या we are बुरा fortunate. बात We है? are fortunate. And it's not just emotion. I think this started with emotion, yeah, but there's a lot of brain involved too in it. There's a Absolutely. thought behind it. It's not just And blind. last thing, every person does it for his himself, his family. हमने कभी भी, इवन माई फैमिली सेज कहती है मेरे को अपने घर को बचाना, माई मॉम से मेरे को मेरे घर को बचाना है, पड़ोस में आग लग के मुझे को फर्क नहीं पड़ता. बट आई फील आई एंड ऑल ऑफ अस आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमें अपने घर को भी बचाना है, हमें आस पड़ोस को भी बचाना है, और शुरुआत हमसे ही होगी, क्योंकि हमें वेट नहीं करना है कि हमारे घर में जिया या सुशांत. एंड इट्स नॉट अबाउट सुशांत और जिया अ सेलिब्रिटी. दे कम फ्रॉम आर सोसाइटी. दिस थिंग इज इन आर सोसाइटी. वो कोई बाहर से मास से नहीं आए. हमारी सोसाइटी के ही these malicious things are happening in our society. It can happen in a middle class family. It is happening. What happened to Jia? Something similar happened in a middle class family like mine. So that means thing is of power. Thing is of money. वो थोड़ा high level पे highlight होता है. कई बार dowry deaths, bride burning. This is not connected to Sushant, but these have been highlighted because now we know these are the things that we can talk about. And हमारी voice है. We will talk about it and we will make it sure that we do not like this. Beautiful. Whether that's it. गुंजन अभी ना मेरे को एक आधा 30 सेकंड दो विभांशु को बोलने के लिए. विभांशु, आज आप अच्छी नींद सोओगे क्योंकि गुंजन बदल गई. एक सेशन में आपने उसे बदल दिया. नहीं बदला? No. Oh God. Shailaja ma'am, I have to say one last point, and like I said, we all have a job, so I do have to get back to it. Yeah. But this last point is, if through this platform we can have an open invitation to anybody, right? To anybody, come on and express your point of view, right? Yes, we're not yes. here to bash you, and we're not here to not to close our ears to any other dissenting voice. It's about having a healthy discussion and then coming up with something that makes sense for the overall society. So it's not just our way, yahi sahi hai, No, yahi no, sahi no, hai, no, no, right? no, So absolutely. we're open-minded. Yeah. So that's And when you spoke what you spoke just now, it is important that people should listen, you know, and it's, yeah, it is good to hear. And there's some people who can't think like you, then they hear it and they say, yeah, she's got a point. And that's the reason we have to make. Okay, I just have to we said it's going to be 2 hours every day, so I'm going to go to Usha. Before I start, Usha, I hope I see you next Sunday in Indra Park. It would have been very great, but Gunjan knows that I'm a heart patient. I'm Oh, not supposed to. Throughout my life, I'm in a lockdown from past 1 year. I'm not okay. supposed to get exposed. Otherwise, I would have really. No, I'll come and I'll come and do the live from there for you. Don't worry. Yeah, that would be great. I've been strictly told I have a lowest No, no, immunity, no, please don't and then apologize. I'll be I'm very happy. sorry. Yeah, please speak. No Please problem, speak. no problem. Yeah. I just happened to join here. I was just going through some of the information in between. So if I happen to, I think there is an echo. Is it audible? Am I clear? Yeah, that's great. Uh, I have, with due respect, few of the information what the experience of others or mine or wise people, Guruji and wise people information. With respect to the sentence, roles, responsibility, attachment, forget and forgive. These 5 points I would like to just put a point. I might totally differ from what I am not able to see your name, sir. So forget and forgive.
there are two things which I had come Yeah. across in my life, in my life or in others' life, which I learned. You will get more attached, and you cannot forgive or forget if you are attached to them more, and you alone feel the responsibility for others and have a respect, okay, and the other person don't reciprocate, but you cannot give away them because you want to give respect to them. At the same time, you want to complete your duty towards that person with complete respect, but they are not cooperating. Okay, that's the one point. That's the point where there is a lot of clashes comes in between, where one person keeps on getting being what you say, it's been trolled or as a way humiliated, but you want to do keep on doing your duty, but you don't find that kind of support within the family or within a relation. That's the one thing. But how much you want to be detached like a water droplet on a lotus leaf, that is the one point. Sir, you would Nosh, like I to just want to say, say? no. I would, Nosh, we're going to meet again tomorrow at 10 o'clock. It's going to be an everyday thing. So I'm going to be strict about the closing time because, it has to Okay. be kept healthy. Nosh, just listen to her and come back tomorrow, definitely. Yeah. So Usha, just make your point and we'll close. And I want Okay, that's the Vipanshu to one make the point. closing. This Yeah. is one point in terms of forget, forgive. We will not have any hatred for anyone for Yeah. they taking us for a granted. But how Mm, long, how much is one point. That is a different point in terms of relations. yeah. If you have done something to a non-related person, if he has done something, you don't get so much attached or feel bad for that. Another point is there was a big discussion on the history, our Indian history, all the stuff, different communities, commit religion, all the stuff. We were told forget and forgive the past, but how far we are led to forget and forgive? But should we forgive our lessons? Forget our lessons? That's the point actually with respect to forget forgiveness. Forgive, fine. It is for you are doing good for yourself. You are downloading your weightage of the burdens or something like that. I totally understand, Mm, but forgetting the lessons, I don't think so. We should really forget the past. We should keep the things. If at all, if we apply the same thing, somebody has also told, yeah, madam, you are told, should we forget and forgive Sushant's incident? No, we don't need to be attached and then burn ourselves, but you know that yeah. has to be there in our memory. That's all my point. Yeah. Thank you. Yeah. Uh, Vibhanshu, Nosh, come back tomorrow. We'll take this further because it's a very very important point because I want like this. I wanted Hanji, to boliye. touch on this topic. We will Yes. continue on the topic of forgive and forget tomorrow. Yes, that's the reason because it's nice because Yeah. I also have a lot of thoughts and it's very nice to then sleep over it and come back. Oh, we lost Vibhanshu. That's sad. Deepak, tomorrow we are having a discussion on your time. So I think we can come back there because we want to close it today. And I wanted Vibhanshu to give the I'll last few be after moments. 11. Yeah. To everybody, I would Can you send me the link? It'll come. It'll come on the Twitter. It'll come on everywhere. It'll come. Yeah. Okay. Sorry, Deepak, please. आप बोलिए ना. to everybody, I would say keep smiling, stay positive, stay healthy, be bold, Yeah. be brave. Yeah. And Gunjanji, I'm appreciating you are talking today, and I'm really proud of you. Just keep it Yes. positive. And Usha ji, जो आप कह रहे थे, we should not forget this, but I would say carry this also along with it. Thoughts are not important. You have to carry this. Carry is to practice along with our sides. Both left hand, right hand से practice करो. अगर अच्छी चीज़ है उसको. Yeah, Hmm. Our one of our maternal grand uncle used to say that leave like a water droplet on lotus leaf. That's Don't it. get attached. Very And good. he was a great vidwan in
Maharajas, in the good Okay, olden that's a days. good picture for my night. Yes. आज सोऊंगी मैं. Shubhratri. Vivanshu, over to you. Yeah, Shubhratri. Vivanshu, your stage now Deepak till ji, we thank stop. you. We think it is over 2 hours and we should close. Since it is on Monday, Tuesday, Wednesday, we will be live at 10 p.m. Indian Standard Time, so we can continue it on also. After my remarks, I would like if Deepak ji will close with some good lines, or Salya ji, you can. So it was nice sharing everyone who have joined or have shared their voice, their experiences with us. Gunjan, thank you very much. And what I want to say, Sushant was like a magnet, and he aligned us all. Everyone was in different directions. He just, as a magnet, attracted toward him, make a void, and now we all are aligned toward that path. तो इसको यूज करना है पावर की तरह. अब इसको मैं इस तरह देख रहा था कि अगर ये हम कंटिन्यू करते हैं, अभी बहुत सारे ट्विटर पे मैंने देखे, ट्विटर वॉर्स और पता नहीं क्या क्या नाम दे दिया गया, बट within for last 3-4 days I am seeing everybody is getting normal. They are saying that we did something wrong, it is not like that, because आप एक स्पेस में चले जाते हो जब इंडल्ज होते हो किसी चीज में, एंड यू थिंक यू आर डूइंग इट राइट, तो समटाइम्स आपका दिमाग क्लोज हो जाता है और आपको लगता है मैं जब सही कर रहा हूँ वाई पीपल आर क्वेश्चनिंग मी. तो इसके लिए हमेशा बोलते हैं, जैसे जिनी जी ने उस समय बोला था कि यादें हमको पता सब कुछ है, चोरी करना पाप है, ठीक है, लेकिन होता क्या है प्रायोरिटीज के साथ ना वो बैक ऑफ द माइंड पे जाती हैं. तो मैनेजमेंट में ऐसे ही सिखाया जाता था कि बैक ऑफ द माइंड, एक आपने सुना होगा, अभी मैं किसी से भी पूछ लूं कि आपके टॉप ऑफ द माइंड कौन से 3 नूडल्स हैं, तो सबके दिमाग में सबसे पहले मैगी जरूर आएगा, बिकॉज वो हर दिन प्रायोरिटी में आपके पास आ रहा है, लेकिन आपको बहुत चीज़ें पता हैं जो आपके बैक ऑफ द माइंड गई हैं, उनको टॉप ऑफ द माइंड नहीं लाया जाता है. तो हमें काम में या फिर बहुत पीयर ग्रुप प्रेशर में आदमी भूल जाता है कि सही गलत के बारे में भी सोच रहे हैं या नहीं. उनको लगता है आई एम गुड एट दिस, 10 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझे सिखा रहे हैं. इट इज जस्ट दैट कि आप धीरे धीरे भूल जाते हो प्रायोरिटी के हिसाब से. आप एथिक्स या मोरालिटी आपके बैक ऑफ द माइंड में जाता है. वो कभी 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 दीपक जी आ सकते हैं, कभी जिनी बोल सकती हैं, कभी नौशेर जी बोल सकते हैं. वो आपको कुछ नहीं, अलाइनमेंट वापस आ रही है, आपको पता तो था ही, इसके लिए किसी गुरु और बाबा की जरूरत नहीं थी. सो दिस इज माई क्लोजिंग नहीं है, ये तो कंटिन्यू ऑन है, जो हम कल भी कंटिन्यू कर सकते हैं. एंड एवरी डे वी विल स्टार्ट फ्रॉम अ टॉपिक जिस पे रिलेट करना चाहेंगे आवर एवरीडे एक्सपीरियंसेस. सो शैलजा जी, दीपक जी, you can continue. Then it is 2 hours over, we should close it now. I think it is we too should late. close. There are no closing remarks. That was the perfect closing remark. I should think we should end with that, and we'll catch with Deepak tomorrow, and me also tomorrow. Okay. Yeah, that was perfectly said. Namaste. Magnets hai, magnet banenge. Bas. And not the least, the backstage team, thank you very much. They were also Thank you controlling guys. very well. You rock. अच्छा, मुझे तो Thanks. पहले लगा कि आपको किसी ने पत्थर मारा है कि क्या, वो जो आपने हैट पहनी है ना पीछे. अच्छा, ये तो वो जब came in between, मुझे लगा यार पहले इनको आज क्या हुआ. Okay, ये तो क्लोजिंग रिमार्क नहीं हुआ, इसको अच्छा क्लोज करेंगे. just want to say कि ना जितने लोग भी बाद में देखेंगे, अभी देखेंगे, you have a voice, guys. Speak. We are here to listen. This is a platform that will be there for as long as you want it. You have a voice. There is no judgment. Please come and speak, because we need to hear you. That's what I want to say. मैं अभी कुछ सोच रहा था ऐसे, और मैं हमेशा ये आजकल प्रैक्टिस कर रहा हूँ. एक गाना है पुराना सा, नाम भूल जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही मेरी पहचान है. So as you said, speak. आवाज को रखो बुलंद, क्योंकि आप चले जाओगे कहीं पे, कोई रिकॉर्डिंग आपकी जो रहेगी ना, वो शायद पहले स्क्रीन भी ना दिखाई दे. आवाज जो है ना वो सबसे बुलंद है. पहले हम लोग रेडियो सुना करते थे, उस पे आती थी ये सब, यू नो. सो आवाज बुलंद रखो, स्पीक अप, स्पीक इट अप. कोई तो सुनेगा, नहीं तो एको होके वापस अपने पास आएगी, दिल हल्का हो जाएगा. That's it. So on the whole, everybody say namaste, and then it will be closed. Namaste. Yeah, namaste. नमस्ते, धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए. See you again. कल फिर मिलते हैं. शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि. Shubhratri.